Hello, am I audible? Hello. Yes, sir. Okay, so you can see my screen. Yes, sir. Okay, great. So today we are going to start with this part, monetary policy, inflation and banking. ठीक ଅଛି। तो गोटे जिन एथरे मन रखियो एटा स्पेसिफिकली सिलेबस रे हमर मेंशन नाही बट एथरो क्वेश्चन रादर बेसी आछि whereas planning टा मेंशन अछि बट प्लानिंग रू मे बी अल्टरनेटिव ईयर रे क्वेश्चन आछि प्लानिंग रो दुई तीनटा क्वेश्चन इंपोर्टेंट तो आई विल गिव यू नोट ऑन इट but otherwise with this we will today try to end our first chapter. And if you see the first chapter of economics is actually the biggest chapter. Yeah? So today we have to extend it a bit maybe. So please have patience. So let's start with monetary policy. कि monetary policy कौन? So see most of these things you must have read in your prelims syllabus I know. So the first part we are going to go a bit माने prelims रे सब जिनसे प्राय पढ़िथियो सब mostly right. So monetary policy you know that there are two kinds of policy. One is monetary policy, another is what kind of policy? Fiscal policy. Fiscal policy. So monetary policy होची सेही policy जोटा central bank गोटे country रो adopt करे. Fiscal policy होची सेही policy जोटा government adopt करे. ठीक है. So this is more related to spending, okay, and this is more related to spending and in general about growth and development of the economy, economic growth. Monetary policy is more about what? Seeing the macroeconomic health of the economy, macroeconomic health. Okay. So we'll discuss about these concepts. But overall, what does this mean? Monetary policy. These are the set of actions by the monetary authority of a country. Okay. Monetary authority that regulates or affects money supply in the economy. Okay. And kahinki ame esu jinsa kariya? Because towards objective to meet the objectives like inflation control, economic growth, macroeconomic stability. These are the broader objectives. Okay. Okay. So let's move on to the next part. Key, what are the types of monetary policy? Actually, types कहवाटा ठीक नुह रादर की monetary policy केते different way रे broadly दुटा different way रे हमें monetary policy को adopt करी पारू depending on the situation. Adopt करी पारू in the sense that depending on what kind of situation our economy is going through, you can either have an expansionary monetary policy or you can have a contractionary monetary policy. तो यार माने कौन expansionary and contractionary? Hang on a second. अरे यार यार माने कौन expansionary माने होची easy money policy, that is when you are lowering the interest rates, means you are trying to expand. तुम इकोनॉमी को एक्सपैंड करिया पे हमें कौन करिया हमें एमती क्रेडिट को और इन जनरल हमें एमती मनी को इजीली अवेलेबल करिया लोगों मनी शुड बी इजीली अवेलेबल इजीली अवेल कार गोटे ऑडियो ऑन अछि काइंडली म्यूट इट सम बैकग्राउंड नॉइज इज कमिंग ओके या बेटर नाउ सो क्रेडिट को हमें इजीली अवेलेबल करिया सो दैट people can people can do more economic activity in the बेसी हो सो क्रेडिट को हमें चीपली केमते अवेलेबल करिया दैट मींस इंटरेस्ट रेट को हमें सब कमे देबा सो इंटरेस्ट रेट जतले डिक्रीज हिजियो सस्ता रे हमको लोन मिलियो सेतबेले we'll try to do more economic activity, so this will lead to economic growth. Okay, so this type of monetary policy is known as expansionary monetary policy. तमे आमे तार ऑपोजिट जदी करिया सपोज इंटरेस्ट रेट जदी बढ़े देबा ताले कोन हबो इंटरेस्ट रेट जदी हाइक हे गेला ताले आमे लोक माने चीप रे मिलियो नाही लोन रो इंटरेस्ट रेट बढ़ी जिवो सो इकोनॉमिक एक्टिविटी विल आल्सो स्लो डाउन. नाउ द पॉइंट होची कि एसो जिंस करा जाय काई ना दिस इज द डायनामिज्म बिटवीन growth and inflation. Sometimes when you need to grow your economy, so interest rate lower कर देला, but try to understand both growth and inflation move in the same direction. जदि interest rate हमें कमे देले economy grow कला ताले inflation भी grow करियो. Why? Because you have easily available money. Inflation माने होची general price level रे rise हो सब goods and services. Okay, so if you have more amount of money available but the amount of goods and services is fixed, then you will have higher inflation. So हमें growth को increase करिया चक्कर रे हमें inflation को भी unknowingly it also increases.
Similarly, if you do the opposite, for to control inflation, suppose आम कौन करिया interest rate कमी देल ताले कौन होगा indirectly that will also affect growth भी कमियो. Okay. Now the point is एटा नुह कि growth exactly जति percentage रे बढ़ियो inflation भी exactly जति percentage बढ़ियो. Okay. So there is a loss in transmission. There are other factors which also impact कि केते rate रे percentage रे growth माने economy टा grow करियो और inflation बढ़ियो. But this is for sure कि both of them will move in the same direction. So this is also something we had discussed, the growth versus inflation would a trade-off, right? So in previous class we had discussed this fact. Now let us come to this part. Ki what is then the goal of monetary authority? Monetary authority हमें कहलु कि monetary policy कौन? The monetary authority रो set of actions है. So who is the monetary authority? Monetary authority is the usually the central bank. Central bank. So in case of India, that is RBI, Reserve Bank of India. So what are the goals of this central bank or RBI in case of India? Remember, our first and foremost goal of any central bank usually it is inflation targeting. Next on we will discuss about that also, but overall एमती भी बुझी पारथो कि inflation targeting माने inflation को control रे रखिया, right? Now अन्य आउ किछि goal अछि कि नहीं? Yes अछि. One of the major goal is to through inflation targeting also macroeconomic stability आनिया. Now what does this mean? Macroeconomic stability. Try to understand. Economics might have also read about this. There are two kinds of economics, microeconomics and macroeconomics. Who can explain me the difference? What are difference on? Sir, microeconomic deals with the behavior of the consumers mostly. Very good. Consumer behavior. That means at the individual level Yes. or maximum at the market level, right? What about macroeconomics? Sir, overall GDP growth rate. Yes, overall economy. Economy in country. general. Okay. So it is at the at a bigger scale. Okay. So macroeconomic stability माने overall economic रो stability आसिया दर. Now overall economic रो stability पे हमें कौन macroeconomic indicators हो एमी. If you see which indicator through रे हमें कहबो कि macroeconomic stability अच्छी और नहीं. These indicators are, for example, aggregate demand and aggregate supply. Okay. Another indicator is GDP of the country. Third indicator, inflation itself is an indicator. For example, if you are taking CPI, okay, consumer price index, if you are taking, that is also an macroeconomic indicator. Different interest rates. So through this, we will be able to say whether an economy is stable or not. For example, consider any country. Okay, what a छोटा country है भी take for example even Nepal. Okay, so how will you know कि नेपाल रो मैक्रो इकोनॉमी ठीक अछि कि केमते को डायरेक्शन में चली छी कंट्री. So we'll go through these indicators. Suppose तार जीडीपी एते भलो नाही. ओके जीडीपी एते बेसी बड़ बिको छोटो कंट्री टा तो छोटो इकोनॉमी. तापर देखियो इन्फ्लेशन कोन अछि. ना इन्फ्लेशन इज लेट अस से अराउंड 4% अछि. तो विल से ओके गुड. एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इज आल्सो गुड. भलो हेल्थ अछि. इंटरेस्ट रेट इज रिलेटिवली लोअर अछि. That means से ग्रोथ आड़ को जाउ. So overall we'll say even if the GDP is less, still the economy is doing well. But consider another country, for example, India case. Suppose at one point GDP तो हमारे suppose 4 trillion around, होगा कुछ 3.7 trillion around अच्छी. But suppose inflation rate, for example, अबे 8 to 9%, suppose 8% ही गला. Let us say for example, okay. So can we say that in macroeconomic stability अच्छी वाली country है? We'll say कि overall stable था ही पर but macroeconomic stability रो गोटे indicator टा बहुत खराब है. So economy रे किसी गोटे issue अच्छी. So now we'll try to find out how to resolve that issue. Are you able to understand? So these are inflation, not just inflation, through other indicators also. The central bank tries to assess and tries to take remedial steps to control different macroeconomic indicators. ଏବେ ଜଣ କହିବ କି sir GDP को केमती control करो. देखो directly central bank will not be able to control GDP, but indirectly by changing different interest rates, it will create a condition in which there more businesses might try to take more economic activity, or it might even if it takes the opposite steps, then it will dissuade people to take more economic activity. So through that it can influence whether the country or economy is growing or not. Okay. But in case of growth, as we discussed,
What is the difference between fiscal policy and monetary policy? The government ro main mandate hochi growth, whereas central bank ro main mandate hochi macroeconomic stability, especially including inflation control. Okay. This is the difference. Now there are certain other GDP under ଆମେ discuss kolu, even though it is mostly government's prerogative, but still central bank also has to take into consideration economic growth. Okay. But primary is this inflation target. Second is economic growth. The main objective of government is economic growth. Second objective of RBI or central bank is economic growth. Okay. Now to boost aggregate demand, okay, what is the level of aggregate demand in the economy? That will also set into motion what is the level of economic activity in the country. To its job is also to manage exchange rate. Exchange rate management माने India currency or domestic currency ଆଉ foreign currency ଭିତରେ specifically some important hard currencies like dollar, okay, UK ର जो pound sterling, तो ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ जो exchange rate ଟା जो ଅଛି कि ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଗୋଟେ dollar what we will get back. Okay. So to manage that also, to overall see what is whether the exchange rate system is working or not, it is also the job of RBI or any central bank. Okay. And public debt management, it would a question mark rakhidaw. Public debt management, the point is right now it is one of the jobs of RBI, but government is also looking at something known as PADMA, Public Debt Management Agency. RBI does not want to do public debt management anymore. RBI is saying कि हमको एक कामों मुक्ति दिया जो किसी और specific agency को दे दिया जो एक काम public debt management agency. But till now RBI is doing it. In future, it is very likely that RBI will not do it. Public debt management माने government रो जहाँ debt अछि public debt, okay, ताकू manage करिया. For example, suppose government किसी debt incur करछि किसी बाहर country रो पैसा नहीं छि, IMF रो पैसा नहीं छि, okay, World Bank रो किसी project ପାଇଁ loan नहीं छि, और किसी अन्य country को पैसा देछि. Even हमरो not just government, even any government agency also, the loans that they are taking, for example, suppose any PSB is taking any ECB, external commercial loan, for that also they will be, government will be responsible, and government has taken this responsibility to RBI, but RBI says ki amku ame kamo karibun. So in future it might happen that you will see a new agency that will take care of all the public debt management. Similarly, if it is looking at exchange rate management, naturally it is also managing foreign exchange rate, foreign exchange reserve, forex reserve. Forex reserve कौन? Foreign exchange means foreign currency assets. Usually foreign currency assets या छड़ा भी आउ किसी जिनसा अच्छी SDR gold loan, sorry gold ये सब जिनसा हमें पढ़ा दिखा. But majorly it is foreign currency assets in the dollar, euro, okay, pound, okay, all of these are being also managed by the RBI. So these are the different roles of Reserve Bank of India. Now these are all prelims perspective of fact, mains perspective रो किसी जाने का दरकार नहीं. So I'll give you the note. If you want, you can note down. Otherwise, that will not be asked in the main exam. The main point we will come to is this part. Now देखिए ये फिगर रे हमें लिखथिलु कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग एटा को बड़ लेटर रे लिखा अछि. The point is, knowingly I have written it in bigger font. The point is that inflation targeting is the main objective of a central bank. Specifically, through RBI Amendment Act 2016, we adopted something known as ITF, Inflation Targeting Framework. Now someone will say, अच्छा हमें तो 2016 ने adopt कलु, ताले कौन सा आगुरु RBI inflation targeting करू नथला. देखो ता आगुरु भी RBI inflation targeting करथला. But 2016 ने officially policy level ले we decided, we took this decision that our main goal of monetary policy will be inflation targeting. Inflation को control करियाटा number one priority होगा central bank और RBI रो. तमन ता आगुरु भी RBI control करूथला, but for the first time हमें inflation targeting को specifically identify कलु and adopt कलु as our policy objective. And to do that, if you try to understand actually hella कौन, see या पछरे भी बहुत सारा politics अछि. I'm just telling you in very brief. hella कौन 2013 रे, if you remember, Raghuram Rajan was made
the RBI governor. 2013 के पावर ଥିଲା यूपीए गवर्नमेंट जाऊ most likely, or I don't remember, but at that time, at that crux between, I think, and a transition period, Raghuram Rajan was appointed. Okay, so from the beginning, BJP government was not very happy with RBI governor. The point was that earlier, if you see, even under the RBI Act, governor of RBI, okay, जे head भी तांकर रुहंती, he was given lots of power, including the power to set interest rates. जो मेजर पॉलिसी इंटरेस्ट रेट या सेट करियार पावर गोटे लोक पाखरे थिला, हु इज आरबीआई गवर्नर. व्हेन द गवर्नमेंट केम इनटू पावर, ओके, तो तांकर प्रायोरिटी थिला, गवर्नमेंट सब प्रायोरिटी ग्रोथ, बट गवर्नमेंट ग्रोथ करिया ट्राई करछन, एपटे गवर्नर इज डूइंग समथिंग एल्स. सो देयर वाज दिस फ्रिक्शन. देन गवर्नमेंट सेड कि ओके, व्हाट विल डू, कि वी विल कर्व हिज पावर्स. So from that, in that context, they amended the RBI Act, original act, and they said कि from now on, कौन हबो, instead of governor जने decision नवा बदलले, we will have a committee. Okay. That committee is known as Monetary Policy Committee. এই committee रे कौन हबो, governor, see, RBI governor will remain, and RBI रे लोक governor को मिसेकी 3 जन रहबे, but आउ 3 जन कौन रहबे, these are government लोक, central government रो nominee. Now through this, they hoped that the government, central government, will be able to take control of RBI. And in that context, if you see, chalo inflation targeting ko to ame kardelu amaro main goal, but the power to decide the interest rates was given to this Monetary Policy Committee, MPC. Okay. So their goal, objective was the same, to contain inflation. That is our main objective. But indirectly या थ्रू रे कौन हैला, गवर्नमेंट रो भी जो माने other objective थिला, which is mostly growth. Now it is not said on the surface, but it is understood that that was the, through this kind of change, government ensured that कि हमारो जो growth जो main objective थिला, that will also indirectly be fulfilled by the Monetary Policy Committee. And if you try to understand, then you'll know कि Raghuram Rajan then left. Then one person called gradually 1-2%, then Urjit Patel became the governor. तो Urjit Patel कौन हला? Sorry, he was the deputy governor or something at that time. तापरे later on Shaktikant Das came. Now Urjit Patel left because of this RBI surplus money issue. Shaktikant Das came in. He allowed, चलो RBI surplus सब दे दिया, RBI government को, central government को दे दो. Now it is going fine because government's person, he is coordinating everything with the government, so all is fine, right? I'm not criticizing anything from economic perspective or even political perspective. I'm just saying that try to understand कि यार background कौन थिला. Okay. Now the Monetary Policy Committee रो काम हला कि again कि inflation targeting, and this line, remember this line, exam रे line लिखियो कि principal stance of monetary policy, that is by RBI, was adopted in 2016 officially to be inflation target. Principal stance means monetary policy रो number 1 priority होची inflation targeting. Okay. Now all of these composition of MPC is appointed, RBI governor, deputy governor, board nominee, all of these are prelims type of facts. This will not be asked in your main exam. In case you want to know, you can go through the note. This is the composition of Monetary Policy Committee. Now a lot of power has been given to Monetary Policy Committee. Now the decision of the Monetary Policy Committee is binding on the RBI governor. Earlier it was the single governor who was running the show. Now it is the Monetary Policy Committee in which the governor is only a member, who is the final decision maker. Now एमाने तो कहले कि आमे इन्फ्लेशन टार्गेटिंग करिया. So inflation targeting माने तुमे केते रेंज रखे बोली कहउछ पचरा हला. So they said कि RBI came up with this range, that 4% plus or minus 2%. So 2% is the lower limit, 6% is the upper limit. This is also something we had discussed last class में discuss करथिलु कि काहे कि ए रेंज टा सुटेबल, because minimum किछ गोटा inflation rate रहिले ही goods and services production टा producer माने कोन हबे, they will be incentivized to increase production. हाँ बहुत अधिका न रहा दरकार, मिनिमम गोटे रहा दरकार, बिकॉज अधिका हेले तो ऑफ कोर्स दैट विल मूव टुवर्ड्स हाइपर इन्फ्लेशन, मनी रो वैल्यू इटसेल्फ ड्रॉप करि जो. हमें कथा होतलु जिम्बाब्वे केस रे, इवन वर्ल्ड वॉर 2 टाइम रे जर्मनी रो भी केस रे सिमिलर हेतला. ओके, आई वाज टेलिंग कि लोक माने कार भर्ती पैसा नै कि जाउतले टू बाय ए पीस ऑफ ब्रेड. ओके, so because money was worthless,
So when your currency becomes worthless, that means your economy has gone into hyperinflation. So to avoid that, okay, what we are trying to do is we are trying to keep our inflation in an optimum range. What a optimum range when best for both growth and development, right? So this is the range 4% plus or minus 2%. Okay. Now before we move to inflation indices, any doubts so far? କିଛି doubt ଅଛି? No. Okay. ठीक है ना, then try to understand this part कि inflation रो index कौन और सेटा केमिति मेजर हुए को स्टेज रे मेजर हुए. Now if you see inflation कहले हम कौन बुझु goods and services रो price रो increase होबाटा over a shorter period or relatively shorter period of time. goods and services रो price धीरे धीरे बढ़ी चलती. This is inflation. Now the point होची let us try to understand कि inflation टा को स्टेज रे आसुची. Okay. And point is कि at various stages you will see different levels of inflation. Initially the inflation will be less जते more stages add ही चलिबो in the production or distribution or selling. Okay. जते बेसी stages add ही चलिबो सते बेसी तार price बढ़ी बढ़ी चलिबो. Of course because intermediaries आसी जेतले intermediaries आसी जे goods and services रो ए transaction process रे सेतले समान कर भी किछि कट रहइबो तांकर भी किछि कमिशन रहइबो. Transport charges रहिबो सेते विभिन्न taxes लागिबो. So for all of these gradually at every stage the price will increase. So let us see कि हमें को inflation index टाକୁ को stage रे माने को inflation index टा को stage रे measure करूची inflation केते अछि. So initially goods and services raw material stage हेतला. So एठी तो inflation किछि भी नै. Now factors of production एथरे आसले. Factors of production आसी producer कोन कला goods and services produce कला. So this is the point of production of goods and services. Now, if you measure what is the level of inflation here, this will give you what is known as producer price index, and this is the very base type of inflation. Okay. In the sense ki initially kete value thila aw ebe kete value achi. Okay. Very basic at the very basic level. In fact, there was a committee called B.N. Goldar committee. It has recommended ki India should also try to measure among the CPI, WPI, ESOB in such. We should also start one producer price index. Okay. Goldar committee had suggested this. Anyway, those are all prelims related stuff. Let us move to the concept. Concept बुझा. The producer जब produce करदला, तब से जिनसे तो transport कराला, तापरे taxes लगी आला, and that went to the wholesale market. एबे wholesale market रे एठू आसु आसु wholesale market रे एठी किछि सब price add हेई गला. ना finally wholesale marketer जे भी बिक्री करो तार भी निजर profit अछि. Okay. So all of this is measured by if you are measuring at the level of wholesale market level if you are measuring ki suppose acha try to understand it is not also just this thing, it is also changing with respect to time. At the wholesale market kali gote value thila aji gote value hela. Okay. So this value increase in this value is measured by the wholesale price index or WPI. Okay. Then from again wholesale market ru puni intermediaries transport taxes esu jinse ki finally retail market रे पहुंचला. Suppose amaro घर पाख दुकान ने आसी पहुंचला. Now from that we are directly buying from this retail market, and the inflation we feel is measured by the consumer price index. Okay. Now one difference here to note is WPI only considers goods, because you can understand कि wholesale market रे केवल goods से बिक्री ही करियो ना, services तो wholesale market रे बिक्री ही करियो. Is it possible कि तमे hospital रे जो rate रे health service पाइयो आउ किछि एमतिया market अछि जोतरे सस्ता रे से same service पाइयो? There is no such market. There is directly hospital. Okay. So wholesale price index is something which measures only goods, whereas consumer price index, it's not just retail market माने केवल आमर किराना store no. Even this, for example, this course that you are getting, so this is also a kind of service. So directly you are availing this service. So this will be counted under CPI. So both goods and services are counted under consumer price index. This is one of the major differences between WPI and CPI. Now this comparison between important inflation indices, again this is more prelims related stuff, they will not ask you in mains.
but हेई पारे कि गोटे short माने brief 10 marker they can ask you in general about inflation index or indicators of write about different indicators of inflation. There you can write a few points about this thing. For example, you can write ki WPI hoji wholesale price index, that is for goods only at the wholesale level. Then CPI, you have different types of consumer price index CPI, and major types are CPI rural, CPI urban, and ये दुटा को मिसे की है CPI combined or CPI C. Similarly, there is CPI industrial workers, CPI agricultural laborers. Go through this, किए ताको release करे को base year, don't need to remember anything. Overall you should know the names, maybe wholesale कौन, CPI C कौन, industrial worker कौन, agricultural laborers कौन. For example, या माने कौन देखो, CPI industrial worker माने होची इंडस्ट्रियल वर्कर माने इंडिया रो जनरली जो जो गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल करंती सेथिरे केते इन्फ्लेशन होची ओवर टाइम सेटा मेजर करे स्पेसिफिकली फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स. तो मे बी तांकर किसी स्पेसिफिक नीड्स एंड वांट्स अछि, तांकर किसी सम स्पेसिफिक थिंग्स व्हिच दे मोस्टली यूज गुड्स एंड सर्विसेज, सो इन दैट दे विल मेजर. एग्रीकल्चरल लेबरर्स मान को सेमते यूजुअली मेजर जो गुड्स एंड सर्विसेज से माने अवेल करन सेथिरे हमें चेक करिया. यार पॉइंट कोन की, यार पॉइंट फॉर एग्जांपल हमर जो वर्किंग क्लास लोक मानकर तांकर से माने इन्फ्लेशन को केते फील करछन, विल सी दैट. सो फॉर एग्जांपल सपोज it might happen that the industrial workers तांको family रे चलो इतना हमें कहीं डिस्कस करें. all of these are prelims related topic, just go through it. Okay, इतना वैसे important no from mains perspective. Understand only this part, headline inflation versus core inflation. I know many of you had read in prelims रे इतरे सब पढ़ी थी, so we are just revising, sort of revising. Okay, main point पे अपन तो हमें आसी ना जोटा mains ପାଇଁ important. तो दुई टाइप रो मेन इन्फ्लेशन अछि, गोटा होची हेडलाइन इन्फ्लेशन, गोटा होची कोर इन्फ्लेशन. हेडलाइन इन्फ्लेशन कौन, आम न्यूज पेपर हेडलाइन जो इन्फ्लेशन यूजुअली पढ़ू इन द सेंस दैट व्हिच इज द ओवरऑल इन्फ्लेशन इन द कंट्री व्हिच वी फील डायरेक्टली. ओके, सो दिस इंक्लूड्स ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. बट कथा होची कि एथिरे कोन अछि किछि वोलाटाइल और सीजनल आइटम अछि. फॉर एग्जांपल फूड एंड फ्यूएल, स्पेसिफिकली फ्यूएल इफ यू सी पेट्रोल डीजल एसो पेट्रोलियम प्रोडक्ट. ओके, यार प्राइस प्लस फूड रे कोन हो हमर फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स, different type of even meat, all of these food items. Okay, cereals, यार भी price value बढ़ुची depending on seasonal supply and demand and supply. But is this the main part of the inflation? Point होची कि एगुडा होची जेहेतु volatile अछि, तेणु ये कोन ये गोटे एमितिया पार्ट को देखौची which is fluctuating a lot, but at the center is the other kind of inflation which is relatively more constant. So we, if you take this part only, then that part of inflation is known as core inflation. माने सही टाइप रो इन्फ्लेशन जोटा कि volatile और seasonal item को exclude कर दोची. So this will give you the long term trend of the country. Okay, यार माने simply I will tell you again, यार माने कौन कि सपोज आम यदि फूड एंड फ्यूएल को भी आम यदि नहीं कि कंसीडर करके आम देखोजे कि इन्फ्लेशन केते अछि, दैट इज आम ओवरऑल इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन को देखिबा ताले हे पारे ग्राफ टा एमती बहुत ह्यूज फ्लक्चुएशन आसीबो ग्राफ रे, बिकॉज़ फूड फ्यूएल इटसेल्फ आर सीजनल और डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर को डिपेंड करी फ्लक्चुएट. फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वार हे गला, फूड फ्यूएल रो प्राइस बढ़ी गला. फूड रो प्राइस अप डाउन केमती होबो ना, फॉर एग्जांपल विंटर टाइम रे वेजिटेबल्स रेट कमी जिवो. फॉर एग्जांपल खरा दिने मे बी आ गोटे को गोटे प्राइस रो रेट कमी जिवो. केतले देखियो अनियन देशर शॉर्टेज हे गलानी, केतले देखियो टमाटो किलो 150 टका हे गलानी. सो एथि पई ए जो फ्लक्चुएशन ह्यूज फ्लक्चुएशन आसीबो. बट ए दुटा को यदि हम काटी दबा ताहले हम जो देखिया हम जो इन्फ्लेशन लेवल ता सेम जेमती हो. सो दिस इज द लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन. ये जो एक्स्ट्रा इन्फ्लेशन होची दिस इज बिकॉज ऑफ दिस फ्लक्चुएटिंग और वोलेटाइल कंपोनेंट्स. सो सेटा को काटी देले हमर जो इन्फ्लेशन ता आसी दैट गिव्स अस द लॉन्ग टर्म ट्रेंड. ओके, these are concepts, important concepts. Again, weightages between WPI CPI not at all required for your means, but it's in the note. If you want you can go through it. My point was you should understand ki WPI CPI broadly some माने से माने सबु जिंस को समान consider करनांती, rather what they are doing is they have divided into different categories. Okay, for example WPI itself is not taking into consideration any services. Even among the goods it is taking into account manufactured products, primary articles, fuel and power. But CPI देखियो दी तारा टिके broader aspect अछि, food beverages tobacco, this is the highest weightage.
miscellaneous item को 26%, housing को 9.7%, so on and so forth. None of this will be asked in your main exam कि लेखो कि तुम्हें कहार केते weightage अछि. This is for your own information only. Now for our actual mains exam, this part starts from the main exam. So our inflation is over, monetary policy introduction is over. Actual main exam रे एबेठु जा पढ़ा हबो क्लास में, actual exam रे हेतु गोटे क्वेश्चन पक्का आसी. So try to focus ki what are the functions of RBI. Almost every year one question is coming from this kind of topics. Monetary policy रे RBI रे function कौन, specifically they can pick up one function and ask you to elaborate. So हम central bank रो काम कौन कौन देखिए. First and foremost, RBI is the currency issuing authority of India. Means note, coin एसबु जिनस को छापियार काम. एथरे भी exception अछि, but we will go to that later. So what is the function of RBI? It is a currency issuing authority. Now try to understand this, that before 1935 our Indian currency issued had 100% backing in gold, and this was known as gold standard. या माने कौन, या माने हो 1935 आगु सपोज RBI चाहिए कि मु टंका प्रिंट करी. ओके, इट वांट्स टू प्रिंट मनी. टंका प्रिंट करी मु लोकों को विल सर्कुलेट इट, एंड लोकों तो डायरेक्टली नुह, यू गिव इट टू द बैंक्स, एंड फ्रॉम द बैंक्स पीपल विल बी एबल टू अवेल इट. तो कंट्री रे प्रथम मनी आसियो, सपोज मनी दे इट वांटेड टू print 100 crores. Now to print 100 crores, first RBI will have to ensure कि equivalent amount रो gold stack ता पाखरे अछि, literally gold रो reserve ता पाखरे अछि. जदि suppose gold रो reserve 90 crore भी हिगला, then it can only print 90 crore of money. Okay. So this was the stringent regulation that the Britishers had imposed. Why? The reason was that आमे जति नगर money print करिया, जति नगर backing आम पाखरे थिले कोन हमो, will be able to withstand any kind of monetary pressure. For example, suppose bank मान को पाखरु गोटे incident है bank run will be. What is the meaning of bank run? Bank run माने हला कि suppose किसी लोग एथरे गोटे bank रे deposit करछन, suppose PNB रे. Okay. So suppose I have deposited maybe 100 rupees, someone 1000, so on and so many people have deposited. For some reason, for example, suppose we believe that this bank is going bankrupt, bank देबालिया हिजो. तो आमे कौन करिया, इमीडिएटली समस्ते एका टाइम रे ऑलमोस्ट जाई डिमांड करिए कि मु जति पैसा देइथिले मते रिटर्न कर. जदि भाबो बैंक पाखरे सेति की रिजर्व नथिबो और आरबीआई रो बैकिंग नथिबो सेति की, it cannot return to all the customers or consumers. So in that case, that situation is something known as bank run. Okay, bank will collapse and people will not get back their money. So to prevent this kind of failure, earlier we had this gold standard ki गोटे सेंट्रल बैंक जो मनी प्रिंट करुची, जेतिकी वैल्यू रो मनी प्रिंट करुची सेतिकी वैल्यू रो ता पाकर रहया कथा गोल्ड बैकिंग. बट आफ्टर 1935 वी रियलाइज कि यार पॉइंट किछि नाही माने कोन कि एंटायर इकोनॉमी रो वर्थ रो वैल्यू रो बैंक रन केबे भी होबो नाही. प्लस सेकंड पॉइंट इज कि देयर इज अ वैल्यू इन ट्रस्ट इटसेल्फ. इफ पीपल ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट, इफ पीपल ट्रस्ट इन द सेंट्रल बैंक, देन गोटे बैंक रो बैंक रन ही पारे, बट एंटायर इकोनॉमी रो बैंक रन होबो नाही. सो डिसाइडेड कि आउ थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंटली कि हमें गोल्ड रखी कि एते रिजर्व करिवु कोन. हमें यदि समहाउ गोल्ड को एटा मोनेटाइज करि पारे, माने गोल्ड को यदि हम किछि यूज करि पारिया, ताले हमें बेटर होबो ना. हमें सेटा बैकिंग रखी कि सेटा खाली हमर गोटे माने ट्रेजरी रे पड़ी कि रहिबार पॉइंट कोन. सो देन वी मूव्ड टू ए ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम व्हिच इज नोन एज फिडुशियरी इशू. फिडुशियरी माने होचे ट्रस्ट. ओके, ट्रस्ट बेस्ड. So trust based issue रे कौन को आला, गवर्नमेंट सेड कि under a minimum reserve system RBI can print any amount of money, any amount. Okay. Even 1 trillion amount they can print. RBI को केवल कौन करियार अछि, मिनिमम 200 कोटी टंका एन्श्योर करिया बैकिंग रखियार अछि. Okay. देखो अर्लियर कौन होतला, 200 कोटी टंका रो जदी से बैकिंग रखियो ताले से केवल 200 कोटी टंका रो नोट छापी परियो. बट मिनिमम रिजर्व सिस्टम रे कौन 200 कोटी टंका हमर गोटे कोर खाली गोटे बैकअप ता ऊपर आरबीआई कैन इशू एनी अमाउंट ऑफ मनी. एबे ताकू कुआई जे एनी अमाउंट ऑफ मनी माने से थोड़े ना 5 ट्रिलियन मनी से छापी दे. दैट इज अ सेपरेट मनी, इवन दे अंडरस्टैंड अबाउट इन्फ्लेशन. बट द पॉइंट वाज एफिशिएंसी कि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक को एते बेसी बैकअप रखिया दरकार नहीं.
So under this minimum reserve system, RBI keeps 200 crore backup, out of which 150 crore is kept as gold and 85 crore it keeps as foreign security. And against this backing, the RBI can print any amount of money. Okay. And here the only exception is 1 rupee note, and only 1 rupee note is issued by Ministry of Finance. In fact, if you see, सबू नोट रे तुम तले देखियो कि आरबीआई गवर्नर साइन करथिबे कि मैं धारक को वचन देता हूं कि माने 100 टका नोट हेले एती 100 टका वैल्यू ताकू मिलियो, जे 500 टका हेले 500 टका वैल्यू मिलियो. So that will be signed by the governor, means RBI is in assuring or giving you guarantee. But 1 rupee note रे तुम देखियो सेतरे secretary to Ministry of Finance will have written that कि मैं धारक को वचन देता हूं, you are getting 1 rupee note. Okay. So apart from that, the exception माने कौन, currency issuing authority of India is the RBI. Okay. Any doubts in this? कार किसी डाउट अछि? हाँ पछ. So repair honor citizen maranti. Voice, your voice is breaking actually, so I'm unable to hear कौन को. Can you repeat? की मारନ୍ତି से तो कनेक्शन टा बहुत खराब अछि. Can did anyone else understand or hear कि आवाज ने मते को कौन पचारछन? कनेक्शन एक्चुअली बहुत खराब अछि तमर बोधे, माने एंते रोबोटिक वॉइस वाला मते मते आसी कटी होछि. आउ का सुना हला कौन पचारछन? ନାଇଁ No, ସାର୍ sir. କଟୁଛି ସାର୍ ଚାର୍ଟରେ ଲେଖିଦେବାକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ନହେଲେ अच्छा, just write in the chat if you can. Okay. मतलब Hello, ग्रुप रे sir. even you can. हाँ हाँ अभी Hello. सुना अछि. हाँ हाँ सुना अछि. Hello, sir. RBI has power to place the more money, but why RBI control the uh, inflation of market? Okay 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 okay, this is a very good question. तो से कहउछन जदी आरबीआई पाखरे मनी प्रिंट करियार पावर अछि, ताले पुनी इन्फ्लेशन कंट्रोल करिया काहे ସେମାନେ ट्राई करछन, मार्केट को काहे कंट्रोल करिया ट्राई करछन या तो. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. द पॉइंट इज कि देखो आरबीआई, अच्छा एटा भी हम कहि परिया सपोज कि हम कंट्री को हम सबल कहू बहुत पैसा रो अभाव अछि, राइट. हमर बजट नाही, सब लिमिटेड बजट रे सब मिनिस्ट्री को बहुत कम कम मिलुची. सपोज भागो हम पाखरे अधिया पैसा होंता, हमें गोटे हॉस्पिटल बिल्डअप करिया जगह 10टा हॉस्पिटल बिल्डअप कर दियंते, है ना. गोटे स्टेडियम जगह 20टा स्टेडियम कर दियंते, पैसा आसिले तो हमर हेई गला. तो आरबीआई डायरेक्टली टंका छापी दोनी. पॉइंट होची जेतले आरबीआई मन इच्छा पैसा छापियो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. गुड्स एंड सर्विसेज अमाउंट गोटे कंट्री रो गोटे शॉर्ट पीरियड रे लिमिटेड अछि, राइट. सपोज जो गोटे कंट्री रे जति सीमेंट प्रोड्यूस होची, जति की एजुकेशन प्रोवाइड करा होची सर्विसेज, जति सपोज मेटल रॉड प्रोड्यूस होची, जहा किछि एंटायर गुड्स एंड सर्विसेज जते फूड प्रोड्यूस होची, ऑल ऑफ दैट आर लिमिटेड. आजि दिन रे तो लिमिटेड अछि ना. बट सपोज आम आरबीआई मनी प्रिंट बहुत अधिक कर देला, तो एबे कोन हो, लोकन पाखरे मनी एक्स्ट्रा बढ़ी गला. तुम पाखरे एबे 1000 टका रहउतला आगु, तो 1000 टका रे तुम लिमिटेड जिंस किनि पारतलो. एबे सपोज आरबीआई तुमको दे देला 10,000 टका, और भाव लाख टका डायरेक्ट तुम पाखरे हेई गला. बट कथा होची तुम भले समस्त पाखरे लाख लाख टका हेई गले कोन हबो. सीमेंट रो वैल्यू गोटे बुरा जदी बस्ता रो वैल्यू थिला आगु सपोज 1000 टका, से राता राती बढ़ी की 20,000 टका हेई जो, और 30,000 टका हेई जो, बिकॉज़ एवरीवन इज विलिंग टू पे फॉर दैट. द पॉइंट विल बी कि धीरे धीरे कौन हम सीमेंट रो वैल्यू सब जिंस रो गुड्स एंड सर्विसेज रो वैल्यू एते बढ़ी बढ़ी जिवो कि फाइनली करेंसी रो इनहेरेंट वैल्यू और करेंसी रो वैल्यू ता पूरा ड्रॉप करिया स्टार्ट करियो. एटा तो प्रॉब्लम ना, इन्फ्लेशन नो प्रॉब्लम, हाइपर इन्फ्लेशन नो प्रॉब्लम कोन हला. हम एते डिस्कस करथली कि जिम्बाब्वे रो कथा मु कहउतली, कार भर्ती पैसा नेकी जाउतले, सेमाने तांकर इशू कोन हला, हम सेही जिंस कहले. सेमाने कहले कि हम पाखरे टंका छापिया मेसिन अछि यदि ता टंका छापो, असुविधा कोन अछि. ओके. सो टंका छापे, बट प्रॉब्लम होची मन इच्छा टंका छापले टंकार वैल्यू इटसेल्फ ड्रॉप हो जो. तापर तुम पाखरे भी बिडा बिडा टंका अछि, मो पाखरे भी अछि. आमे गोटे से ब्रेड पैकेट पे छड़ा बेड़ा हवा, तुम कहयो मु गोटे ब्रेड पैकेट पे लखे देबी, मु कहयो 1.5 लक्ष देबी. ता माने कोन हमर ए करेंसी रो वैल्यू किछ रहला नाही. Again the country will be forced to go to the either to barter system, or चलो barter system तो ना गल नहीं, at least they will not use their own currency, they will move to
another currency, for example for US dollar. Ebe in fact tame jodi Argentina ର case देखियो, are you seeing the case of Argentina? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ right wing president has come to power, very populist, ମାନେ ବହୁତ Javier ସାରା Milei. vote ରେ, very good, Javier Milei. he is complete radical. ଆମେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ recently ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ, he is saying କି ସେ central bank କୁ ହିଁ itself abolish କରିଦବ, central bank of Argentina, and he is saying କି Argentina ଯୋଉ peso ତାଙ୍କର ଯୋଉ currency ଟାକୁ that will be completely replaced with dollar. The point is because Argentina was seeing hyperinflation, no, ମାନେ very high levels of inflation. Hyperinflation ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, but very high levels of inflation. So he wants to replace it with US dollar. The point is कि तुम मन इच्छा एमती प्रिंट कर चलियो ताले तुम करेन्सी रो वैल्यू किछ रहबनी, तुम कंट्री टा फोर्स से जीवो अन्य देशर गोटे कंट्री को करेन्सी को यूज करिया. ओके, एंड मतलब दैट इज अ वेरी शेमफुल थिंग. इट मींस तुमर इकोनॉमिक सॉवरेंटी ही किछ नाही, राइट? So that is why even if RBI can print money, but it is told not to print. In fact, taxation ने तुम्हें पढ़ी थी गोटे something known as monetized deficit. So Google this या पर रिसर्च करिए, या माने कोन गवर्नमेंट जेतले तार डेफिसिट को कवर करिया पे सेंट्रल बैंक को कहयो कि तुम टंका छाप, सेतले ई इशूटा हुए, monetized deficit. सेतले भी से सेम इशू है, देशरे इन्फ्लेशन लेवल बढ़ जाए. Okay, now come to the second point, government's bank. अच्छा एगुडा हमें कौन देखिए, these are all the functions of RBI. देखो हे पारे क्वेश्चन obviously will ask you pick up one function and they will ask you to write 10 marker usually पढ़ो, so you have to expand a bit, but this is the basic framework. Government's bank तमाने कौन, RBI is the bank of the, or you can even call it banker to the government itself. Banker to government means banker कौन, it raises loans on behalf of the government and also manages its borrowings. Okay, for example we are talking about public debt management. इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कहे आरबीआई को मो पाखे पैसा नहीं, आरबीआई कह ठीक अच्छे पगड़ी बांधिक से बाहर कि गवर्नमेंट लोन उठार अच्छे आमको. Similarly, all the public debt that will also be managed by the RBI. Why? Because they are the experts, financial experts. That is the point. Similarly, RBI is the agent of government of India in IMF membership. IMF member. Similarly, you can write many. There are many economic or financial forums or fora in which RBI represents India. For example, Basel Committee. Okay. Bank of, that is actually Basel Committee, no, the actual now is Bank of International Settlement, BIS, which is established in Basel, Switzerland. There also India is represented by RBI. Okay, so the economic matter it will represent India, and any other task as asked by government. For example, maybe recently हमें कथा होतलो RBI surplus money transfer. Actually RBI कौन करे, बहुत सारा extra sources तार अच्छी जो थरे से income करे. Okay. And RBI has also invested in different institutions. It has invested in capital market, so ସେଥିରୁ ବି ତାକୁ पैसा मिले. Similarly, किछि बैंक मानकर जो deposit RBI रे अछि, from that also it makes money. So all of this is kept in RBI as आगुर at least ला surplus money ही की थिला, and almost every year एथुर किछि किछि amount that used to transfer to the government of India. But या पाखरे I think around 87,000 crore or something. Okay, 87,000 crore, not 87 crore. 87,000 crore or something money deposit ही थिला. Then government of India को लोभ लागिला. Government of India कहले कि चलो एते पैसा तुम रखी करूछ कोन, तुमको तो खर्च करियार किछ नाही, खर्च तो आमे ही करछु डेवलपमेंटल काम रे, वेलफेयर काम रे, तो हमको ए सब पैसा दे दिया. तो आरबीआई को कहला प्रथम से आरबीआई गवर्नर जो माने थिले डेप्टी गवर्नर, दे डिड नॉट वांट टू डू इट, but they were forced to transfer money when Shaktikant Das came, and they were forced to transfer money. So basically RBI cannot defy the government, but still we are saying that RBI should be an independent institution, because गोटे country रो regulator, को भी sector रो regulator should be as independent as possible from the government, but practically it is difficult. Okay. So that is the meaning of banker to the government, government's bank. Now just as it is a government's bank, it is also banker's bank. Banker's bank and the regulator, also the regulator of the banking sector. माने बैंक मानकर बैंक माने सम माने बैंक मानकर बाप से, एंड रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सेक्टर माने बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करिया. बैंकिंग सेक्टर सब रूल्स रेगुलेशंस
ସମସ୍ତର operations that is being controlled by the RBI. So let us see what this means. So for example, RBI will issue, control and as well as cancel bank licenses. तुम्हें बैंक गोटे स्टार्ट करिया आगु you have to take permission or you have to take the license from RBI. So RBI will issue license. तुम्हें यदि खराब काम कल, if you are माने चीटिंग वीटिंग कल, ठीक है, बैंक और बैंक रन हेला किछि भी हेला, if RBI felt that you are not doing it, you are not protecting the interest of your depositors, तुम्हें लोकंकर पैसा डिपॉजिट नहीं गायब हो गला, then it will also cancel your license. Okay. Not only of domestic banks but also foreign banks which open the branches in India. जो foreign bank branches India रे open हुआ, इस समस्त से control करियो. Second is RBI will also ensure consumer protection. Okay. Depositor protection, investor protection को से protect करियो. For example, suppose को गोटे बैंक रे हेची बहुत सारा बैंक हेची ना, PNB जो क्राइसिस हला, पंजाब नेशनल बैंक से माने बहुत ठकेई करथिले, पैसा बहुत हेरफेर करथिले. येस बैंक बहुत सारा डिफॉल्टिंग माने डिफॉल्टर्स को बहुत सारा अधिक पैसा देइतला without securing any collateral. So in any such cases RBI will finally intervene. Okay, for example RBI will punish them. चलो yes बैंक रे तो हलानी से पॉलिटिकल हाथ तो थिला, but RBI has the power to ensure consumer protection by intervening. For example, it can even remove the board members of a bank, है ना, remove को जति माल प्रैक्टिस किछि हो, they can simply remove him. Similarly, it ensures transparency in banking operations. Transparency माने कौन? For example, disclosure norms. कि तुम्हारा बैंक रो एक्टिविटी कौन, तुम्हारा मैनेजमेंट रे किए अछंती, बोर्ड मेंबर्स किए अछंती, you have to disclose to the customers because accordingly they will take an informed decision कि हमको ए बैंक रे पैसा डिपॉजिट करियार अछि कि नहीं. Right. Similarly, it will also ensure adequate reserves of the bank. Now यार माने कौन, हमें पर गोटे पार्ट रे आसिया कैपिटल अकाउंट रिजर्व विषय CAR विषय हमें पर आसिया. For the timing, remember this CAR. Okay. RBI ensures CAR also. Then it also protects the critical economic infrastructure of the country. Critical economic infrastructure माने कौन? For example, anti money laundering activities. Okay. Money laundering विषय in general हमें कथा हितले black money को white money करिया. तो जो banking channel through रे जहाँ ऐसे वो कारबार होची, it will try to prevent that. Terror financing. Okay. So these are critical economic infrastructure माने कौन, जोटा country रो economic sovereignty को impact करूची. Now come to this part, very important, Basel norms. Basel norms कौन? Basel होची स्विट्जरलैंड रो गोटे जगहटा, सेठी गोटे इंस्टीट्यूशन टा हेची which is known as Bank for International Settlement. या अंडर रे गोटे कमिटी अछि, Committee of Bank Supervision, CBS. Now this committee has established a set of rules or set of standards, rules का ठीक है, set of standards for the sound banking practices. माने बैंक मानकर across the country which principles they should follow to ensure consumer protection and समान तांकर निजरो growth ପାଇଁ भी कौन कौन principles ସେମାନେ adopt करिए. This has been given by this BIS, and this BIS is also sometimes called as Central Bank of Central Banks. Okay, means बहुत सारा यार मेंबर जो माने BIS रा मेंबर हेले around 35 to 40 countries मानकर central banks. Okay. For example, India आम जो कथा होतले इंडिया रो RBI, तो सेमती US रो फेडरल रिजर्व, डिफरेंट कंट्री रो सेंट्रल बैंक्स माने होतंती BIS रो मेंबर. सेठी से माने बसी डिस्कस करंती, दे टेक डिसीजंस. Raghuram Rajan, when he was the governor of RBI, he was also one of the members of, I think he was the माने ଗୋଟେ ଭଲ position से टाइम पे ଥିଲେ, से भी rotating basis रे तांको दिया जाए. So he was also a member of this BIS. So BIS is known as Central Bank of Central Banks. Now what are these Basel norms itself? Basel norm कौन ना पांचटा major principle एथिरे अछि. तो यार निमोनिक दिया है to remember this camels. Okay, एथिरे L किछि नहीं, बाकी पांचटा अछि. तो C stands for capital adequacy. ता माने कौन, capital adequacy माने होची गोटा बैंक रो capital adequate amount रहइबे. Okay, capital माने तारो सेही financial assets and backup which will ensure कि तारो गोटे strong foundation अछि on the basis of which it can undertake all kind of banking services. ता माने कौन, गोटे strong foundation माने कौन, माने होची suppose तुम कहि कि मोटा बैंक स्टार्ट करी, तुम कहो ठीक अछि चलो बैंक स्टार्ट करिया, हम कोन करिया
तुम कह मो पाखे 1000 टଙ୍କା अच्छी चलो मुझे आम घरे गोटे बेसमेंट रे गोटे बैंक बोली कहीदी सामने बोर्ड लगे दूची तापर मु लोक डाकी कहि कि ये 1000 टଙ୍କା रु 500 एमती दु जन को देखिए कहि कि तुम मते एतिक इंटरेस्ट रे पैसा वापस करियो कैन इट स्टार्ट एज अ बैंक इट कैन नॉट स्टार्ट बिकॉज तार किसी स्ट्रांग फाउंडेशन किसी नहीं देयर इज नो कैपिटल कैपिटल एडिक्वेसी माने कोन बैंक रो एटलीस्ट किसी तार निजर किसी गोटे जागा थिबो तार फ्री कैपिटल थिबो इन द सेंस कि दैट कैपिटल शुड बी अवेलेबल टू इट टू यूज इट इन एनी वे इट शुड नॉट बी कि चलो जो पैसा से धार देछि केवल सही पैसा ऊपर डिपेंड करू सही पैसा आसिले ही मु फर्दर एक्टिविटी करी so there should be capital adequacy of the banks and also share market रे invest करू suppose say share capital that is that counts under capital adequacy second point is asset quality what is the meaning of this asset by the way if you see this bank मानकर एटा दुईटा डिविजन अछि let me find this asset and liability yes see this just try to understand this कि बैंक रो दुई टाइप रो जिंस थाए गोटे होचे एसेट्स गोटे होचे लायबिलिटीज ना एबे एसेट कहले हम कोन सुना होछ एसेट माने जोटा होची बैंक रो किछोटा पॉजिटिव जिंस ओके बैंक रो जोटा माने किछि प्लस पॉइंट लायबिलिटी होची जहा ताको परे मे भी सुझेया पड़ियो ओके सो एसेट कहले कोन कहै छै यूजुअली लोन्स गिवन बाय द बैंक तो बैंक जोटा लोन देछि अन्य लोक मान सेटा होची तार एसेट आमे अन्य का लोन देछु तो सेटा हम एसेट केमति हला because we will get in return principal as well as amount sorry interest right so this will give us greater return than what we gave them so that is why it is an asset but कथा होची बेले बेले इशू कोन होय हमसे से लोन मिले नहीं so then it gradually becomes bad loan or something which is known as non performing asset npa यहाँ पर भी आज आज क्लास में हम देखिया कि npa कोन but my point is asset means the major asset of a bank are all the loans given by it similarly all the investments made because investment किसी return पर मिलियो आमरो कैश रिजर्व बैंक रे इटसेल्फ जहाज ऑल ऑफ दीज आर एसेट्स बर्तन लायबिलिटी कहले कोन बुझा जाय लायबिलिटीज आर डिफरेंट डिपॉजिट्स डिपॉजिट उडा हम पय लायबिलिटी काहे की बिकॉज़ बैंक रे जदी के डिपॉजिट करछि ताले बैंक को फाइनली से डिपॉजिट ऊपर किसी रिटर्न दवा पड़े प्रिंसिपल अमाउंट संगे राइट so that is why it is the liability on the bank so if you see among liability there are two kinds of liabilities one is demand liability one is time liability demand liability होची सही liabilities और सही टाइप रो डिपॉजिट जोटा को कि बैंक को ऑन डिमांड रिटर्न करियो पड़ियो okay try to understand this very simple definition I know many of you would have known from prelims class also so we are going a bit fast okay? so demand liability कौन ना जोटा कस्टमर को ऑन डिमांड मिलियो ऑन डिमांड कौन सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स सेविंग्स अकाउंट माने इंडिविजुअल जो अकाउंट हम पर्सनल अकाउंट क्रिएट करूछे जोतरे सेव करिया को हमको इंसेंटिव मिलुची थ्रू सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सो तुमरा हमरो जहां भी बैंक अकाउंट अछि यूजुअली दे आर सेविंग्स अकाउंट सो दैट मींस व्हाट हमें जतरे सेव करछे जतरे इच्छा जीवा विथड्रॉ करिया को बैंक हैज टू गिव टू अस हमको से बैंक मना करि परियो current account कौन similar to savings but difference is कि current account is usually held by business type रो लोक माने जो मान को माने बहुत ही frequently transaction करिया दरकार पड़े किछि पैसा आसियो बड़ बड़ अमाउंट ऑफ पैसा आसियो इमीडिएटली ताको ट्रांसफर करिया को पड़ियो आ का पुनी आ को गोटे इनकम आसियो पुनी ट्रांसफर करिया पड़ियो तो करंट अकाउंट रे कौन होय ताको इंटरेस्ट किछि मिले बट दे कीप दिस काइंड ऑफ अकाउंट बिकॉज़ इट इज इजी टू ऑपरेट सो ए बट अगेन कथा होची समान भी जतले डिमांड करिया को जिवे बैंक को इमीडिएटली सिर्फ तांको पैसा फेराय पड़ियो so all of these are known as demand liabilities time liability कौन ना only after a time it will be a liability on the bank means गोटे fixed time पई ताको से पैसा को जो डिपॉजिटर भी डिपॉजिट करथियो से पैसा को से मागी परियो नाही so that means it is a fixed deposit account right means तुम 2 वर्ष पई 3 वर्ष पई fixed deposit account करछो तो 2 वर्ष पई usually you cannot go and you cannot ask जदी मागियो ताल तुमको माने you will not get much return right so that means time liability माने fixed deposit demand liability माने savings and current account deposits and when we add these two type of accounts what we get is net demand and time liabilities or NDTL okay. so यार यूज कोन आमे परे देखिया now come back to this part कि what is the meaning of asset now asset कथार आमे एति बाट गले
assets and liability ताले कौन liability होची deposit asset होची जो loan टा दिया है वर्तमान कथा होची बैंक टा जो loan दबो it is up to it कि सेटा whether it will be secured or it will be unsecured secured माने होची किसी गोटा collateral against दिया हो loan unsecured माने होची no collateral माने होची बैंक suppose विजय माल्या गला yes बैंक पाखकू और suppose SBI पाखकू विजय माल्या कहला कि मोड़ा मद फैक्ट्री किनिबी तैयारी करी मते 1 crore रुपए दरकार तो बैंक कहला ठीक अछि एटा धरो 1 crore रुपए घर को जाओ दैट इज अनसिक्योर्ड लोन जदि आ गोटे बैंक कहला कि 1 crore रुपए तुमको देबी मु लोन बट तुमे तुमरो कोड बिल्डिंग में भी किछ गोटे फैक्ट्री कहार किछ प्लॉट रो कागज पत्र मो पाखे रखी जाओ so that is known as that is collateral that is known as secured asset okay even within the secured asset there is a difference in quality right for example suppose जने हाउस और किसी गोटे बिल्डिंग को प्लेज करी जाउछ प्लेज करी जाउछ माने हाउस घर रो कागज पत्र जमा करी कि एटा बंधा रखी जाउछ ओडिया रे कहया जाय ना बंधा रखी जिवा तुम बंधा रखी जाउछ तुम किछि लोन नउछ सपोज तुम तुमरो ओरिजिनल जमी पट्टा रखी नै कि आछ जदि से बिल्डिंग टा सपोज पूरा नुवा बिल्डिंग अछि नाउ इट इज a good quality collateral so but suppose तुमर हेटा पूरा ओल्ड बिल्डिंग टा को तुम प्लेज करी आछ से बिल्डिंग टा केबे भुसडी पडियो तार ठीक नै एंड से बिल्डिंग एगेंस्ट गोटे ह्यूज अमाउंट लोन नै छ now there is a difference in quality also na so all of these come into this term asset quality means loan ro quality kon whether you have given loan on the basis of whether mane loan is given on the basis of collateral or without collateral even within collateral what kind of collateral it is okay. so based on that that means basel norm कहूची कि बैंक मान को कि तुम तुम asset quality भी देखो okay. this is only by the way this is one side of the story the second part it is saying ki under asset quality itself basel norms or bis is saying ki apart from that you also try to classify different types of loans what is the meaning of classification of loans so let's move to this part loan classification in search yes now you see under this point non performing assets this is the classification of assets asset माने कौन loans so loan को banking sector रे एमतिया different way रे divide करा हिची first ये photo टा देखो left hand side रे so loans or advances given by banks or financial institutions they are of two types one is called standard asset माने जोथरे ताको regularly interest मिली मिली चलची and तापरे समान को पूरा entire amount मिल जाला आउ गोटे हला non performing asset which is bad loan non performing asset is also known as bad loan I have not written it here write it here bad loan so how we are classifying it see this table now ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲୋନ ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଇଛୁ ସେଥିରେ କିଛି ବି ଡିଲେ ନାହିଁ ସେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପରେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ମିଳି ଚାଲିଛି that is known as standard asset ଯଦି suppose 0 to 30 days delay ହେଇଗଲା either in payment of installment or in payment of principal okay then it is known as special mention account 0 or also known as SMA 0 ଯଦି 31 ରୁ 60 ଦିନ ହେଇଗଲା ମିଳି ନାହିଁ ଆମକୁ କିଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଫର୍ଦର କ୍ଲାସିଫାଇ କରାଉଛି SMA 1 61 ରୁ 90 days ମିଳି ନାହିଁ ଯଦି SMA 2 above 90 days ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ then banks will classify it as non performing asset माने 90 days उपरू मिलना ही माने मिलिबार आशा बहुत क्षीण होइगला ओके सो आरबीआई को एबे माने सॉरी बैंक को एबे टेंशन लागियो बैंक विल टेक सम एक्शन so bank will either sell it off in a cheap rate or it will माने complete loan waiver भी देगा so it is up to the bank they will take some decision so what is the yes the point of this discussion is that basel norm bis कहले कि सब बैंक मान को ए वाला क्लासिफाई करिया को ताको एसेट गुडा को क्लासिफाई करिया को कहले तुम क्लासिफाई करो कि को एसेट रो तुम रेगुलरली पैसा मिलु छी कोथरो मिलु नाही यार पॉइंट कोन यार पॉइंट होची जोडा रो मिलु नाही ताको आइडेंटिफाई करा जाय परबो एंड यू कैन टेक एक्शन ऑन दैट दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट एसेट क्वालिटी सिमिलरली मार्केट डिसिप्लिन माने for example what is your operating principles through which you are operating in the market discipline means you should have
ethical standards of operating. Market discipline also means कि suppose if you are raising loan in any case from the market, how you are going to pay that back. Okay. So all of these goes into the market discipline. माने bank माने they should be very disciplined in their dealings with the market. Okay. Similarly earnings माने सब bank का किसी गोटे good earning source थियो, steady earning source थियो. Banks themselves they can invest in the capital market, share market. So and they also earn from the loans given. So banks will always try to ensure कि तांकर earning in the healthy earnings हमको मिलुଛି. Balance sheet should be positive. Right? And finally systems control and supervision कि bank will have control and supervision over their own working. These are all the 5 principles of the Basel norm. Now if you see say जो bank on international settlement BIS or Basel committee that had given different recommendations in different phases. Basel 3 माने third phase रे बहुत सारा norms गुड़ा को recommend करा हितला, and this including one of those recommendation was related to something known as provisioning of assets. देखिए provisioning of assets कौन? So we come to this part, capital adequacy ratio under provision. Now provisioning ର ମାନେ ହେଲା to Sir, set aside. Yes. sir, जो पचार मार्केट डिसिप्लिन कहले सर सेटा बुझी हेलानी टिके हमें कोन लेमन्थ लैंग्वेज रे कोन कर भाजीबी मार्केट डिसिप्लिन माने मार्केट संगे डीलिंग देखो बैंक एंड मार्केट तांका भितर भी डीलिंग होची. फॉर एग्जांपल इफ यू आर बैंक इज ट्राइंग टू रेज लोन फ्रॉम द मार्केट, बैंक सपोज किसी गोटे अनएथिकल वे रे मार्केट रु लोन रेज कला, बैंक कहला कि 25 दिन रे पैसा डबल स्कीम. नाउ फर्स्ट टाइम तो तुम्हें उठे देला पैसा, बट तापर कोन हबो कि देन कस्टमर्स विल नॉट ट्रस्ट इन द बैंक, तो तुमरो डिपॉजिटर्स माने कमी जिवो. So this is just one example. Market sangre there are various dealings of the bank with the market, and it should ensure कि those are all in disciplined way. माने ethical principles through it will follow. Okay. ओके Market discipline. So to come to this part, provisioning माने कौन? To set aside a portion of the bank's profit to compensate for a probable loss due to incomplete loan recovery. ता माने हला या कि suppose in the विजय माल्या केस रे हमें देखिए. So what he used to do is कि he used to go to different banks. Suppose this is bank 1, this is bank 2, bank 3. Now what Vijay Mallya used to do कि से bank 1 नु जाई कहे कि मते suppose 1 crore rupees दरकार, तो bank 1 कहे कि अच्छा ठीक अछि हमें दबु तो but what are you going to do? Mallya will say कि see this is my balance sheet, देखो मो पाखरे एती टंगा अछि, so I am going to do this and that, मु business venture करी, I will give you your money back. So bank 1 कोन करियो आखि बुझी ताको ट्रस्ट करी ताको पैसा दे दो. Now Malia will go to this bank and will show the bank account. एई बैंक रे जो पैसाटा अछि सेटा से तारो बैंक रिसिप्ट रे देखि कि बैंक टू को कहबो कि देखो मो पाखरे एती टंगा अछि, मते आउ किछि टंगा दरकार, गिव मी दिस मनी, आई विल फर्दर इन्वेस्ट इन माय बिजनेस एंड ग्रो इट. बैंक टू भी किछि चेक न करी पैसा दे देला खुशी रे ट्रस्ट करी. बैंक 3 भी दे देला. फाइनली व्हाट Malia will do, what he has actually done, I have seen his building in Bangalore, I have seen his residential house. Instead of investing in the business, in his own business as investment, he has used it as consumption. Means he has built a fantastic house for himself, different जगह रे plot, different माने बहुत सारा consumption कर देला. And finally he was unable to return the money. And जहाँ लोन देइथिला तापर default करियाला, means आउ देला ही नहीं, देश छाड़ी के भागियाला. Now the problem that was faced by the banks was that एबे बैंक माने जो पैसा देइचंती तांकर लॉस हे गेला एंटायर. नाउ तांका पाखरे जो कैपिटल रहिया कथा मिनिमम से कैपिटल टा रिड्यूस हे गेला. जो कैपिटल रिड्यूस होला, जो माने एक्चुअली डिजर्व करंती समान को से पैसा मिल पारलानी जहां ऊपर समान इकोनॉमिक एक्टिविटी करथान. तुम आम भलिया लोक जहां को बैंक लोन सॉरी हाउस लोन गोटे दरकार, गो टू द दिस बैंक विल कह कोन कहियो कि नहीं हमर तो विजय वाले से पैसा नहीं होला. सो देयर इज a you have to keep in mind कि if you are doing any banking operation there is a probability that will हेलो sorry सर. हाँ 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 सर, ସେମାନେ ଲୋନ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ଯାଉଛି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଗୋଟେ ସେମାନେ ବନ୍ଧକ ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତ ସେମାନେ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ମର୍ଟଗେଜ ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ. हाँ रखिपारे ତ एमती भी कहनी कि रखिपारि नथांदे.
Again, we were discussing about this asset quality also, na. Many of the banks which gave actually loan to Vijay Mallya, they kept ମାନେ ସେମାନେ secured loans ହିଁ ଦେଇଥିଲେ, but problem ହେଲା କି for example Vijay Mallya what he did was କି ଗୋଟେ same asset को for example same building or same company को different bank ରେ ସେଟା pledge କରିଦେଇଥିଲା। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକ ଏବେ ବି ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାର ପଟା और ଗୋଟେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସେମ୍ ଜାଗାରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ କରିକି different ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେଇଦେବେ and ସବୁଥିରୁ ସେମାନେ ପଇସା ଉଠେଇନେବେ। ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇଜ ନଟ୍ କି ସେମାନେ ଆସେଟ୍ ବି ଦେଇଥିଲେ, ୟାର ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ର ରିଜନ କଣ ଜାଣିଛ? ଏଣ୍ଟାୟାର ଜିନିଷର ରିଜନ ଥିଲା କି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡାଟାବେସ୍ ନଥିଲା। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ୱେର୍ ନଟ୍ ଟକିଂ ଟୁ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍। ସପୋଜ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସେ ପଇସା ନଉଥିଲା, ସପୋଜ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲିଙ୍କ ଥାନ୍ତା, ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ସେ ଯାହା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେ ପଇସା ଦଉଛି ସେ ଅପଡେଟ କରିଦଉଥାନ୍ତା ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ଯଦି ଥାନ୍ତା, ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଥାନ୍ତି ଭାଇ ସେ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ମୋଠୁ 1 crore रुपये नहीं चाहिए, तो बैंक तो कहता अच्छा तुमठू 1 crore नहीं चाहिए, तो मत से 1 crore को देखिए मत कौन देख अलरेडी मो पाखे कोटी टका अच्छी मत आउ कोटी टका दियो, तो ताने कौन तुम पैसा मत देखो तो ये दे ना ये दे ना। इनफैक्ट बिकॉज ऑफ दिस माने जस्ट नॉट ऑफ विजय माल्या, because of many such big businesses defaulting, then government came into something which is known as intercreditor agreement, or out sorry intercreditor agreement no, which is this database I see intercreditor something L कौन अच्छी बोलो, hang on a second, I'll just check and tell you, गोटे already गोटे सेमतिया database टा आसी हला जो थरे कि सब बैंक माने they are sharing information with each other, okay, hang on a second, नहीं man unable to find, I'll tell you, so already गोटे Indian government गोटे database बाहर करची establish करची which is for the banks to communicate with each other regarding the intelligence or information of all its borrowers, okay, so ei सब जिंस हल्ला परे जाई कि एबे होउची, जदि एटा आगरो हेइतान ताले ए सब जिंस हेइ न थान। I'll tell you another thing, ये जो defaulting, by the way can you tell me what a common logic लगी मते कुह जे जनरल लोक माने माने retail consumers like you and me, we are taking loans from the bank and big businessmen are also taking loans from the bank, now आम भीतर भी किछि लोक डिफॉल्ट करि होउछन आमे पे करि पान, किसी बिग बिजनेसमैन माने भी डिफॉल्ट करि होउछन। If we see the total size of total default or bad loans of Indian banks, which category do you think contributes more to it? माने किए बेसी डिफॉल्ट करूछि? Can you tell me? सर बिग बिजनेस बेसी डिफॉल्ट Yes, big business माने जहाँ पर बेसी पैसा से माने बेसी डिफॉल्ट करछन rather than people like you and me, okay? Individual retail consumers we count for very less amount. विजय माल्या टाइप लोक माने ସେମାନେ बेसी करछन, but what happens in the end? गवर्नमेंट कौन करियो इधर ताको लोन वेवर टाइप रे किछि गोटे एग्रीमेंट करी ताको छाडी दो, ओके, द पॉइंट इज एंड दिस इज आल्सो क्रिटिसाइज्ड कि तुम छोट छोट लोक को धरुछ ताको एते हैरान करछ तांको जहा कोलेटरल नैतिला बिक्री करछ, तो बड़ बड़ लोक को किछि करनो। यस बैंक रे जो मिसमैनेजमेंट हला, देयर मैनेजमेंट डिड नॉट फेस एनी इशू, तांकर निजर करप्शन पई तांकर इनकम्पिटेंसी पई जो एति लोक हैरान हले से माने किछि तांकर मैनेजर माने कि किछि तार इंपैक्ट पड़ले किछि हला, व्हाई बिकॉज़ चलो से तो पॉलिटिकल इशू हो गला, बट you will be able to understand why this happens in our country, okay, को part रखले, okay, so the point of capital adequacy ratio is that तो BIS कहूची कि लोक बैंक मानको कि तुमे गोटे प्रोविजनिंग करो, मींस तुमे तुमरो फ्यूचर रे किछि लॉस हेई पारे न, जो मानको पैसा दोच मे भी ताको किछि पैसा फेरियन, तो ताको कवर करिया पे you set aside a portion of your bank's profit, your profit रो तुम गोटे परसेंटेज तुम साइड रे रखो, जोटा कि तुम खाली बैकअप रखियो कि जदि तुम फ्यूचर लॉस हो यू विल बी एबल टू कवर फॉर इट, एंड दैट इज नोन एज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। बर्तमान कथा होची केते परसेंटेज ऑफ योर प्रॉफिट एंड हाउ दैट इज कैलकुलेटेड, दिस इज इंपोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स मेंस रे सो जिंस लिखिया दरकार, फॉर्मूला लिखिया दरकार। सो कार इज calculated as total free capital of a bank divided by its risk weighted assets, किसी जाने ऐसे जिंस जाने दरकार नहीं, जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि कार रो माने कोन एंड केते परसेंटेज यूजुअली रखा जाए। फॉर एग्जांपल जदि आमे कहूचे कार रो वैल्यू यदि 10, ता माने होची जदि गोटे बैंक को 100 टका लोन दबार अछि ता पूर्व से 10 टका फ्री कैपिटल रखियो, माने 10 टका फ्री एमतिया जिंस टका थी जोटा व्हिच इज फ्री फॉर इट टू यूज,
को गोटे जिनस टाई अप है नथियो ओके जदि 10 टका एमती रखिला ताहाले ही से 100 टका दे पारि इफ वी फिक्स की बैंक रो सब बैंक रो मिनिमम कार हवार अछि 10 practically how much it is taken 8% was actually given by the Basel III norms but RBI कोन हला एक्स्ट्रा कॉस्ट से कि ताको 9% हमर इंडियन बैंक मान को आइछि तमे 9% रख कैपिटल एडुकेशन रेस ओके तमाने हम बैंक मान को आइछि कि मिनिमम 100 टका लोन देले मिनिमम 9 टका फ्री कैपिटल तुम पाखरे निश्चय रहइबा उचित अदरवाइज तमे दबो ना ओके so now let us move on to the next part कि RBI रो आउ कोन फंक्शन अछि next part होची RBI is also the custodian of India's forex reserve हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रो होची RBI custodian means सब पैसा को से रखे ताको मैनेज करे इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नबा दबा सब करे RBI why because they are the experts right now foreign exchange itself पहले कौन बुझा जाए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रे फर्स्ट आसे देखो पिला माने यूजुअली भावନ୍ତି फॉरेन एक्सचेंज माने होची केवल फॉरेन करेंसी बट दैट इज नॉट द पॉइंट इन प्रीलिम्स यू माइट हैव आल्सो सीन दिस ना यार सब वैल्यू गुडा देखि जो कौन से लिस्ट रे देखि जो कौन अछि but again we will just discuss in brief so first and foremost there are foreign currency assets dollar अछि british sterling अछि euro अछि japanese yen अछि chinese renminbi अछि okay so usually apart from that other type of currency जोड़ा मेजर करेंसी आउ किसी कंट्री रो भी करेंसी रखे फॉर एग्जांपल कैनेडियन डॉलर को भी आरबीआई रखुची लेस अमाउंट रे मैक्सिमम इट इज केप्ट एज यूएस डॉलर similarly second point is gold reserve भी किसी रहुची which is also part of india's forex reserve there is special drawing right of IMF try to understand all these points special drawing rights special drawing right कोन एटा होची इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रो बुक एंट्रीज तांको खाता रे केवल नाम लिखि दिया नाम लिखि दिया हले कोन हबो ना से कंट्री को किछि it will give extra amount of economic space to the uh, country's central bank to operate okay for that it is known as paper gold means actually gold fold किसी में मिलेनी but paper gold मिलियार माने कौन you are giving some extra allowance to the country now यार माने कौन extra allowance कौन IMF allocate करे different amount of quota to each country quota माने कौन माने होची गोटे कंट्री रो जीडीपी रो साइज जति and also depending on some other factors sorry let me change this IMF will say कि if you want to borrow money from us you can take up to this limit not more than that so that is the quota of that country for example suppose आम country रो आमे किछि crisis face करू specifically you would know that there are something known as BOP crisis balance of payment crisis okay 1990s रे 1991 रे crisis ता हितला तो आमे कोन कलु हमर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हे गला हमर इंपोर्ट अधिका थिला एक्सपोर्ट कम थिला तो ता द्वारा कोन हैला हमर फॉरेक्स रिजर्व ता डिप्लीट करि गला पूरा कमी गला so finally we were forced to go to the IMF will say what आमे तुम पैसा दबु बट मन इच्छा न तुमरो जीडीपी रो साइज जति तुमरो इकोनॉमी रो जति नीड्स अछि अकॉर्डिंगली विल गिव यू द मनी and this thing is and this will also be जो मनी टा भी दिया हला that is also on the backing of the some kind of some pledge of the country okay for example if you know BOP crisis रे we are forced to India was forced to airlift its gold reserve भी हम पढ़िनु ना gold itself is part of forex reserve तो हमर तले सब foreign currency सब सरी गला finally we were forced to move gold आ होची forex reserve रो last stage जेतले कंट्री gold move करिया स्टार्ट कला माने forex reserve ताने तागरो सरी छि सब foreign currency assets सुदा सरी छि so they will give us the quota ru amu paisa diya habo but to a certain limit and ei jo paisa ta diya habo this is known as book entry okay so book entry against तुम paisa diya habo and suppose कि तुमरो जते entire quota अछि if the country is not availing entire thing हमको maximum मिल पारि बोली कोन हम maximum नबा हमें जति suppose एति नला suppose हमें 50% यारो quota रो नेलु हमें पैसा धार नेलु आ 50% हमें avail कलु बाकी जो जो जिंस रहला ताको आ जाय reserve tranche position so even this much amount also you can take later on immediately तुम दिया हबनी ता पर हेडो दिया this is also part of forex reserve so this means ki this is something which is
a book entry, but which is known as paper gold, because if there is entry, then you will get the resources, right? And the second part to remember this is कि IMF जहाँ भी loan दिए, usually यदि huge amount रो loan दोगी, then it will demand structural reforms to your country. And usually जो structural reforms of the economy से demand करे, it is actually usually these are known as austerity measures. Might have read these terms earlier, right? Means गोटे country को बहुत अधिक खर्च କରିବାକୁ दिया हबନି, ताको तुम सब फालतू खर्च को बंद करो, सबुथे कम कम खर्च करो, ताहले जाइए हम तुमको पैसा दबु। एंड से बहुत कंट्री माने बेले बेले कथा कहए कि आईएमएफ रो जो आईएमएफ गिव्स ए पिल व्हिच इज बेटर देन द डिजीज। मींस आईएमएफ जो ऑस्टेरिटी मेजर एडॉप्ट करे कंट्री मान को कहे, दैट इज एक्चुअली वर्स देन द इकोनॉमिक क्राइसिस फेस्ड बाय द कंट्री। फॉर एग्जांपल ग्रीस फेस करथिला इस सिमिलर सिचुएशन, तांको ऑस्टेरिटी मेजर तांको ऊपर इंपोज कराला, किछि से माने खर्च कर परिए नाही, इवन तांकर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पई किछि खर्च कर परिए नाही। तो फाइनली ग्रीक लोक माने प्रोटेस्ट करके व्हाट दे डिड वाज कि they had to discard this kind of agreement. Hang on a second, 1 second. Sorry about that. Okay. So where were we? Yes. So these are the components of the forex reserve. Okay. So see here, it is written country's reserve transposition is the difference between the IMF holdings of that country's currency and the country's IMF designated quota. Okay. Crudely, that is the difference that you can also avail in future. And this is the size of our forex reserve right now in December 2023. It is there. Sometimes it usually fluctuates somewhere between 500 to 600 billion dollars. So it's a very very healthy range. In fact, this is one of the biggest forex reserves in the world. By the way, can you tell me कहार forex reserve रो value अधिका आइथियो? इंडिया रो forex reserve रो value अधिका बेसी size रो और US रो? What do you think logically? Sir, India ro, काहे की? because we are import dependent. Yes, very good. In fact, US रो forex reserve रो value बहुत कम है ना, क्योंकि सेମାନଙ୍କୁ रखिया दरकार नहीं, मैकिंग रखिया दरकार नहीं, they are the center of world's economy, right? बट आमको रखिया दरकार बिकॉज आम इंपोर्ट करने आमको दरकार, इंपोर्ट करने आमको डॉलर एंड अदर फॉरेन करेंसी एसेट दरकार, टू व्हिच वी विल बाय दीस गुड्स, राइट? नेक्स्ट कम टू दिस अदर रोल, प्रमोशनल रोल। आमे एगुडा सब कोन कंटिन्यू करछे, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ आरबीआई, राइट? आरबीआई रो कोन कोन फंक्शन अछि, या थ्रू रे ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ एंटायर मॉनेटरी पॉलिसी इतरे सरजियो, राइट? So functions of RBI under गोटे होची promotional role, ता माने कोन, it promotes the banking habit among the people. Banking habit माने कोन, savings habit, कि लोकन को encourage करावे कि save करो, thrift होची to save, okay, the value of saving. So banking habit बतन, what is the point होची कि it also mobilizes the savings. लोक माने save कले, individual माने savings कले, से मनी टा कोन बैंक रे डिपॉजिट हैला, बैंक रे जो मनी डिपॉजिट हैला, now it will be given as loan to other sectors, specifically to productive sectors of the economy. For example, we had read about this infrastructure specifically, okay? Different type of infrastructure, not even just in roads, highways and all, even social infrastructure like healthcare, mane school, education, hospital, okay? So these will lead to economic growth. So we had also discussed this in previous class, को class में मन पड़े, बट आमे डिस्कस करथिला कि इंडिया टा होचे गोटे savings is the driver of Indian economy, okay? Household savings. So ये savings टा केतेले हबो, त savings करिया habit टा promote करले तो, so this is the promotional role. And suppose तुम पाखरे जहा पैसा अछि, घरे किछि भी पैसा अछि, suppose you are
stacking and you are keeping it in your house. तो घरे तुमर पैसाटा से खाली रहिले तार किसी यूज हो परिबनी, पर तुम बैंक रे डिपॉजिट करियो, इफ यू आर मोबिलाइजिंग सेविंग्स, देन देयर विल बी क्रेडिट क्रिएशन इन द इकोनॉमी. क्रेडिट क्रिएशन माने कौन? इफ यू आर फॉर एग्जांपल तुम भाया बहुत सारा सब लोग सपोज मिसे गोटे बैंक रे रखी सपोज टोटल 100 रुपीज. ओके, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, and suppose this is the only bank, but even out of 100 rupees it is not necessary that this, suppose एतरो 10 टका से निज पाखे रखियो, 90 रुपीज सपोज से लोन दबो, बट 90 रुपीज रे सी केते लोगन को लोन दबो? 90 रुपीज रे तो एग्जैक्टली सेति अमाउंट रो पैसा दबा भी दरकार नहीं. से 90 रुपीज रे मे बी 110 और 120 और 130 वैल्यू से लोन दे परियो. ओके, सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस कि जति की बेसिस थियो ताठर से अधिका भी लोन दे परियो, एंड लोन दिया जाए एथि सो दैट again this money will get circulated and it will create economic activity. It will create goods and services producer मान को produce करिया को encourage करियो. Who does this work? RBI does this work. RBI केमती work करियो? तो जहाँ money suppose bank माने आनिले, bank are also keeping certain amount of money in RBI on the basis of that, as well as what is the need of the economy, RBI will print money, and this money will again it will give to maybe banks and other financial institutions, through which this entire cycle will continue. So consumers are here in between and we will use it for our economic activity. Setru kichi earn kale puni we will return it back to the bank as deposits. Part of it is deposit. So katha hoji ମାନେ 100 ଟଙ୍କାର ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ ସେଟା ବଢି ବଢି ମେ ବି 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପହଞ୍ଚିବ. So means on a lower amount of basis of money we are creating more amount of money. This is a minimum credit creation. Gradually different level le credit creation माने होची different level le money टा और money रो value टा बढ़ी बढ़ी छै, right? Credit, so by mobilizing savings, RBI helps to create credit in the economy. And ए value टा ए money टा समाने further कौन करिवे? बैंक माने economic activity में केमती दे, usually they give example loan आकार रे दियन, right? So savings, bank will take in savings and they will give out loans. This is the basis of credit creation. A promotional role under a बहुत ही important जिनिस अछि which you should write more about, that is known as financial inclusion. In fact inclusive growth रे भी आमे जिनिसटा पढिथिलु. Inclusive growth and development रे you will see कि एई भला गोटे डायग्राम हितला कि inclusive growth रो dimensions कोन, सेथरु गोटे dimension थिला financial inclusion. So today we are going to read a bit more about that financial inclusion माने कोन. So financial inclusion means to bring everyone all into the formal economy and to provide people banking services at affordable cost. Okay, formal economy को आनिबा, informal economy no. Formal economy for example कोन, suppose you are doing any dealings with cash form without going to the bank. Now that is part of the informal economy. सेतरे तुमे tax pay करनो, सेतरे government तक किछि प्रकार regulate कर पानो. But if you are, for example, if you are paying someone some salary, if you are an employer, you are paying salary, सब किछि bank through रे होउची. Now you have to pay TDS, right? Your employee has to pay TDS, tax is being paid. So now what will happen is that government will get some revenue. So financial inclusion ର ମାନେ होची एमिति हमें सब लोगों को gradually formal channels of economy रे आनिबा. Formal channels of economy रे not only it will not just benefit the government or the central bank. Who will get benefited more are the people themselves also, because if you are in the informal economy then chances are more that you might even not be getting your rights and benefits, right? Suppose you are working as a migrant laborer. If you are getting paid in cash form only, you don't have any job security, you are part of the informal network. But if your employer is now forced to do everything in the formal economy, okay, now they will be forced to provide you some kind of employment benefits also. So this is the reason why we want that most people should come into financial under the ambit of formal economy. And the third and most important aspect is when all the people are in the formal economy itself, then the country's economy will grow, right?
बर्तमान कथा होची हम फॉर्मल चैनल्स ऑफ इकोनॉमी रे आनिया केमिति यार एंट्री पॉइंट it is usually said that the entry point of all formal channels of economy is to open a simple bank account. Now even among bank accounts if you see there are two kinds of bank accounts. You want space on it. If you see the bank accounts गोटे टाइप रो बैंक अकाउंट रे कोन जोटा नॉर्मल टाइप ऑफ बैंक अकाउंट सेथरे आमे नोटिस करते गोटे मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट अच्छी राइट सो आमर जहाँ भी यूजुअली जो आमे बैंक अकाउंट क्रिएट करू सेते गोटे मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट अच्छी जदि तुम सेति दोनो ताल तुमको फाइन पड़ियो बट देयर आर सम अदर काइंड ऑफ अकाउंट्स व्हिच इज फॉर पोर पीपल और जो माने फॉर्मल चैनल्स ऑफ इकोनॉमी रे केबे भी आसी नांती ताको फर्स्ट टाइम आमे आनिया को चाहू सेमानकर मिनिमम बैलेंस अकाउंट रखिया दरकार नहीं and these kind of accounts are known as BSBDA basic savings bank deposit accounts जोथरे मिनिमम बैलेंस रखियार रिक्वायरमेंट नाही एंड ए जो प्रोग्राम टा हितला म स्कीम हितला प्रधानमंत्री जनधन योजना या अंडर रे कुहा हितला कि लोक माने बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट क्रिएट करि परिए जो लोक माने केबे भी बैंक रो गोटे भी माने बही माने खाता ओपन कर नथले जो मानकर अकाउंट नथला समान को एनकरेज कराला कि देखो तुम मिनिमम बैलेंस रखिया दरकार तो गोटे एमिति खोली के रखनो असुविधा कोन आ तो से लोक माने कहले कि हम रखले लाभ कोन मिलियो ताको कहला हमको तुमको सब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आगरो जोटा फॉर एग्जांपल तुमको चावल मिलथला किछि भी बेनिफिट जोड़ा गुड्स फॉर्म में मिलथला और सर्विसेज फॉर्म में मिलथला ताको हमें डायरेक्टली कैश फॉर्म में तुमरो ए अकाउंट को डिपॉजिट करियो सेति पई तुम खोलो प्लस सपोज सेतरे तुमरो मिनिमम बैलेंस भी दरकार नहीं जन तुमरो एति पैसा सरी गला डिपॉजिट यू विल नॉट बी पेनलाइज्ड तुमको फाइन लागियोनी सो एमितिया कहि कि बहुत सारा लोगों को आना हितला इनटू फॉर्मल चैनल्स ऑफ इकोनॉमी अंडर दिस स्कीम प्रधानमंत्री जनधन योजना you see this is the part of the jam trinity jandan aadhar and mobile this is known as the jam trinity is the center of india's financial inclusion program okay. jandan aadhar and mobile now what is the other aspect of financial inclusion credit मान लोगों को लोन दबा universal access to institutional loan at a cheap interest rate okay. and also different types of loan for different sections of people काको तमाने काको हाउसिंग लोन दरकार थई पारे काको पर्सनल लोन दरकार थई पारे बाबा को चाहू छ हाउसिंग लोन मिलिबन पर्सनल लोन नहीं पारियो different types of loan to different people this is also part of financial inclusion third and most importantly banking services जो एरिया रे हमरो बैंक नहीं सेठी हमें बैंकिंग सर्विसेज दो फॉर एग्जांपल regional rural banks okay small finance banks these are all examples of providing banking services to rural or extension areas and to specific sections of people bank correspondents or bank साथी जो मन को who are extending bank services to the rural areas they are also part of or one of the pillars of financial inclusion right and the last part is insurance means term or life insurance se pare health insurance se pare even तुम गाड़ी पे insurance se pare for a different for people or for commodities you can buy insurance savings for retirement all of these come under financial inclusion right remember financial inclusion itself can be a 10 marker 10 marker question ସେମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ କି what do you mean by financial inclusion write different aspects of it what has india done for financial inclusion ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ jam trinity କଥା ଲିଖି ଦो ଏଟା ଲିଖି ଦେଇଥାଅ by the way I don't know why you forgot that ଏଟା ହଉଛି ଜନଧନ आधार and mobile okay tinta together they are making jam trinity this is towards financial inclusion of indian economy right now let us come to developmental role of RBI developmental role माने develop किसी गोटे जिनस को डेवलप करछि को जिनस को डेवलप करछि this is to promote financial development as well as financial institutions I forgot to write financial institutions develop करिया कौन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अछि फॉर एग्जांपल एक्सिम बैंक अछि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एक्सिम बैंक इफ यू नो फॉर एग्जांपल जो माने इंडियन एक्सपोर्टर्स माने समाने किछि तांकर गुड्स को एक्सपोर्ट करिया को चाहउछंती दे नीड एनी काइंड ऑफ क्रेडिट एक्सिम बैंक विल प्रोवाइड देम cheap credit credit so it specializes on trade
रिलेटेड एक्टिविटीज तापाई जहाँ लोन दरकार से सब जिन हैंडल करे एक्जिम बैंक सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया सो इट हेल्प्स स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट में हेल्प करे एग्रीकल्चर में सेमती नाबार्ड अच्छी एग्रीकल्चर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट सो ऑल ऑफ दीज आर द डेवलपमेंटल रोल ऑफ RBI. Now under this developmental role there is something else, and again this can be asked as a separate 10 marker भी पचार दे पाते directly कि what do you mean by priority sector lending, how it is helping or how it is part of the developmental role of RBI, or directly they can ask you कि what do you mean by the developmental role of RBI. so हम देखिए priority sector lending कौन. again I'm sure कि prelims से बहुत पिला बहुत इटा पे पढ़ी थी, still we are going to revise it very quickly. so priority sector lending कौन. देखो बैंक माने जो लोन दौरान डिफरेंट सेक्टर को दौरान सो गवर्नमेंट कहला कि तुम्हें प्रायोरिटी बेसिस रे किसी सेक्टर मान को लोन दियो जो मान को यूजुअली आउ कहीं लोन दौना और जो सेक्टर रे बहुत लोन रो आवश्यकता अछि सो सेही जो सेक्टर मान को कुहावे प्रायोरिटी सेक्टर इन सेही सेक्टर मानकर आरबीआई इटसेल्फ हैज मेड ए लिस्ट कि ए सेक्टर को तुमको लोन दबार अछि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर एमएसएमई सो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कोन ना आरबीआई मैंडेट्स आरबीआई फोर्स करे बैंक मान को टू लेंड ए मिनिमम परसेंटेज ऑफ देयर फंड्स ओके एंड दिस माने को फंड दिस इज अ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट एएनबीसी कोन डिटेल ले हम जीवा दरकार नै पॉइंट होची टोटल हमरो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन जति करजो गोटा बैंक माने टोटल तमे जते लोन दोछ अमाउंट रो सब को मिसई तार गोटा सर्टेन परसेंटेज को यू आर मैंडेटेड to provide to certain sections or certain sectors. Okay. These are the earlier they were called as weaker sectors. Now they are being called as priority sectors. Okay. So ये weaker sector मान को तुम्हें लोन दियो which who actually need cheap interest rate रे जो माने तांको दरकार अछि लोन ना हमें देखिया कौन कौन से सेक्टर गुडा बट फॉर द टाइमिंग फर्स्ट सी की को डिफरेंट बैंक कैटेगरी पे केते केते पीएसएल नॉर्म्स अछि ना डिपेंडिंग ऑन व्हिच काइंड ऑफ बैंक यू आर RBI will mandate you to have that much amount of priority sector lending. So public sector bank or private sector banks. Remember PSB. This is known as PSB. Private sector banks short form को है PBBs. Both of these PSBs and PBBs in general माने जति की भी हमें usually बड़ा बड़ा बैंक देखते हैं SBI, ICICI, HDFC. Okay. So SBI is for example public sector bank. ICICI और HDFC these are private sector banks. So they are mandated to provide 40% of their total लोन मान टोटाल गोटे वर्षर फाइनेंशियल ईयर जिते से लोन दौरान तार एटलिस्ट 40% से प्रायोरिटी सेक्टर को लोन देवे whereas if you see in other category of banks regional rural banks okay, urban cooperative banks as well as small finance banks ऐसा लगे तुम लिखिए ऊपर এটা कहीं लिखा होता है all of these are mandated to have give 75% of their total loan to priority sectors यूसीबी को अर्लियर एटा 40% थिला एबे ताकू बढ़ी तार टारगेट भी 75% कर दिया है बट ता कहै छी 2026 भितरे से माने शो करिए कि माने टोटल लोन रो 75% दोचंदी प्रायोरिटी सेक्टर if you see which are the sectors covered under priority sector lending these are agriculture affordable housing MSME education social infrastructure renewable energy export credit loans to weaker sections okay weaker sections माने की tribals scheduled caste okay old age people जो how physically handicapped these are all the weaker तांकर भी list अछि कहा कहा को माने you have to provide under weaker section of people okay. so ता यार माने कोन suppose renewable energy ता माने कोन renewable energy को लोन दबार माने कोन suppose तुमे जीव कि तुमे कहया कि मु गोटा सोलर पैनल प्रोजेक्ट करूची जो पई मु हम घरे सोलराइजेशन करी ता पई मते पैसा दरकार लोन दरकार तो से लोन टा काउंट हो पीएसएल अंडर रे तो ताको से माने सपोज ता पई तुमको 2 लाख टका देइछंती आ सेटा को से माने ताकर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टैली रे ऐड कर दे ओके कि हम मिश्रा हमको 2 लाख टका दिया है रिन्यूएबल एनर्जी अंडर सपोज यू आर तुम गोटे तुम गरीब लोक तुम गोटे घर करिया पे हाउसिंग लोन गलो नॉर्मल लोक गले अलग कथा माने गले सन को ओके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अंडर रे सो एई भले है कि लोकंकर ऐड है कि लोन जति दिया है दैट शुड कम आउट टू बी 40% ऑफ दैट टोटल लोन मीन्स टोटल लोन से 60% तक मन इच्छा जहाँ को दे पारे किंतु 40% जहाँ बाध्य ये प्रायोरिटी सेक्टर मान को लोन दबा एनी डाउट सो फार
No. ତାର ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ ଟା ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିଦେବେ ମାନେ ସେ ଟର୍ମର ମିନିଂ Entire financial inclusion, okay, तारा मानने देखो financial ସେ inclusion. ଟର୍ମର ମିନିଂ ଟା ମାନେ Okay, yeah, I got it. Financial inclusion ଆମେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲୁ, you remember inclusive growth and development ରେ ଆମେ starting ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲୁ. growth ମାନେ ହଉଛି economic growth, development ମାନେ ହଉଛି human development which is based on the economic growth and that is a broader term. ତ ସେଥିରୁ ଆମେ towards human development ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ term ଆମେ ପଢିଥିଲୁ inclusive growth. ୟାକୁ short ରେ ତମେ ଏମିତି କହିପାରିବ growth for all. ତ ଯେମିତି ଆମେ growth for all inclusive growth କହୁଛୁ, ସେମିତି financial sector ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ formal financial channel ରେ include କରିବା and specifically under that ସମସ୍ତଙ୍କୁ banking services provide କରିବା, banking services availability ଥିବା, ସମସ୍ତ ପାଖରେ insurance ଥିବା, এই ସବୁ ଜିନିଷକୁ କୁହାଯାଉଛି financial inclusion. यार माने कौन देखो, यार माने मे बी because it might happen because we already all of us usually have a bank account, ठीक ଅଛି, तो we are unable to understand कि जिनसर माने कौन, यार importance कौन. ତମେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଏରିଆକୁ ଯିବ, ବହୁତ ପୁରା ନିପଟ ମଫସଲ ଟାଇପର ଯିବ, ହେଇପାରେ ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଘର ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଥିବ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବି ସିଙ୍ଗଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ. ତ why is this a big deal? तुम कहोगे कि ସେମାନେ ତ ଇନକମ କରୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା କଣ? ଅସୁବିଧା ଏଇଆ ହେଲା କି if you don't have bank account then तुमको ये फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर रे इनक्लूड ମାନେ एंट्री ही କରିବା तुम ପାଇଁ डिफिकल्ट. ମାନେ ହଉଛି ସପୋଜ ତମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲ କାମ କଲ, ତ ସେ ଲୋକ ତମକୁ କହିବ କି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ପେଟିଏମ କରିଦଉଛି, ତମ ସାଲାରୀ ଦେଇଦଉଛି, ତମେ କହିବ ତମ ପାଖରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତମ ପାଖରେ ସାଲାରୀ ଦିଅ, ତମେ କହିବ ନାଇଁ ମତେ କ୍ୟାଶ ଦେଇଦିଅ. ତ ସେ ଲୋକ କଣ କରିବ, ମେ ବି ତମକୁ ଠକେଇ ବି ଦେଇପାରେ, ସପୋଜ ନ ବି ଠକେଇଲା, ମାନେ ବୁଝଛ ତମର ଏଣ୍ଟାୟାର ଲାଇଫ ଇଟ ଇଜ ବିଙ୍ଗ ସ୍ପେଣ୍ଟ ଅନ୍, ମାନେ you are not part of the formal financial channel. तुमको निजको लोन दरकार अछि, तुम कहा गोटे महाजन पाखु जाई कि हाई इंटरेस्ट रेट नो, राइट. तुमर सपोज गाड़ी एक्सीडेंट हे गला, नुआ गाड़ी किन एक्सीडेंट हे गला, यू डोंट हैव एनी इंश्योरेंस. इंश्योरेंस एबे एटा भी जान छी कि तुम बैंक अकाउंट नाही, बेसिक किछ फाइनेंशियल तुमरो किछ भी इंश्योरेंस, तुमको इंश्योरेंस के दो, इंश्योरेंस तो लिंक हो ना कोड अकाउंट संगे. तो दे विल से कि सपोज तुम कहे कि नहीं मो पाखरे इंश्योरेंस सॉरी बैंक अकाउंट नाही, तो जान का हमें तुम पे केमते करू, हमें कैश थोड़ी ना तुम पे करू. Are you able to understand? So गोटे why we were discussing कि entry point, formal financial channel रो entry point होची गोटे basic होची bank account रहया. तमन this is the most basic banking service. Banking service is a bigger thing. या अंडर आहुरी बहुत सारे जिनिस आसे, but having at least a bank account. So if we include, and there is a large percentage of Indian population who lack any kind of bank account and they are not part of the formal economy. तो तांको आमे at least गोटे bank account खोले दवा. That will also work as financial inclusion कि ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସର୍ଭିସେସ୍ ପହଞ୍ଚୁ and ତାପରେ add on once bank ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଗଲେ କଣ ହବ, ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ add ହେଇପାରିବ. ଓକେ, ତାପରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କର ସବୁ ପେମେଣ୍ଟ ବି ସବୁ ଅନଲାଇନ ହେଇପାରିବ, ତାପରେ ଦେଖ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ବି ହେଇପାରିବ. ତମ ପାଖରେ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବେଶୀ ଗୋଟେ ନାହିଁ, କ୍ରେଡିଟ ସରି ଡେବିଟ କାର୍ଡ କି କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ନାହିଁ, ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ୟୁପିଆଇ ବି କରିପାରିବ. So financial inclusion माने आम देशर समस्त formal channels of economy रे आनिया so that they can avail the different banking services. And specifically if you see को area रे बेसी banking services बेसी अछि, urban area रे अछि, that means rural area रे बेसी नाही. So specifically to take these kind of banking services to rural areas also, that is also part of financial inclusion. For example, suppose आम जो banking correspondents कहूचे, ସେମାନେ କଣ literally they are ମାନେ ସେମାନେ ବାଇକ ରେ ବସିକି ଯାଇକି they are providing banking services to rural area, ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁ ଯାଇ ପାରନ୍ତିନି, ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଥୀ ମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ସେ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି. For example, selling them any insurance product. Okay. So that is also a big deal. Right? This phenomenon is known as financial inclusion. And inclusive growth ଯେମିତି ଥିଲା growth for all, financial inclusion ମାନେ banking and other services, financial services for all people should be able to avail it. Right? ବୁଝିହେଲା ବୁଝି ହେଲାନି? ବୁଝିହେଲା ବୁଝ ସାର୍. ओके ओके ମୁଁ ତ ଏଇ ଲୋକଲି ୟା ପରେ ବୁଝି ହେଲାନି. ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖ, by the way, they can directly ask you on financial inclusion itself also. ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଚାପ୍ଟର ଟାକୁ କଭର କରି ଯାଉଛୁ, ରାଇଟ୍? ଓକେ, ଲେଟ୍ସ ଟ୍ରାଇ ଟୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ପଢିକି ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଏ ବ୍ରେକ୍, ଶର୍ଟ ବ୍ରେକ୍. Controller of credit, and this is actually the most important
objective or function of RBI or any central bank. Controller of credit माने credit supply को कंट्रोल करिया माने कोन ताको चाहे इंक्रीज कर दे परिया ताको चाहे डिक्रीज कर दे परिया एंड दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट सेंट्रल बैंक विल इंक्रीज और डिक्रीज क्रेडिट सप्लाई ना यार माने कोन की क्रेडिट सप्लाई को हमें इंक्रीज और डिक्रीज करिया तो सेंट्रल बैंक पाखरे केतटा टूल अछि टूल मींस दीज आर यूजुअली द मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल कहा थ्रू रे हमें गोटे इकोनॉमी रे केते पैसा मूव करूची केते रेट रे ओके केते रेट रे लोगों को लोन मिलुची ताको हमें कंट्रोल कर परिया and these tools are divided into these broadly these two categories quantitative tools and qualitative tools quantitative quantity means something that you can objectively assess okay and qualitative means this is something subjective so quantitative tools माने कौन ता भीतर देखियो broadly ये सब जिनसे जहाँ पढ़ाई थे prelims रे भी these all come under quantitative tools liquidity adjustment facility या अंडर है ऐसे repo और reverse repo cash reserve ratio statutory liquidity ratio bank rate open market operations marginal standing facility ये सब जिनसे others आउरी बहुत सारा अच्छी standing deposit facility गोटा अच्छी आउरी दो तीन टा अच्छी don't need to go into detail these are all the major parts repo reverse repo crr slr bank rate open market operations and by the way qualitative tools रे भी मु note दे दीची I am not going to explain it because qualitative rules will not be asked neither in prelims nor in mains एटा बहुत ही गप टाइप रो जिंस जस्ट देखि दो एतरे बेसी किछि काम एक्चुअली कोन की क्वालिटेटिव टूल्स रे काम किछि हुए एटा गोटे अछि बट यू कैन नॉट एक्चुअली जदर काम हमर किछि हो पाए सब काम एक्चुअली हो क्वांटिटेटिव टूल्स एक्चुअल क्रेडिट कंट्रोल विथ क्वांटिटेटिव टूल्स सो लेट अस सी की क्वांटिटेटिव टूल्स कोन कोन अछि फर्स्ट आसिला लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी नाउ यार माने कोन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी माने लिक्विडिटी को एडजस्ट करा व्हाट डज दैट मीन कि लिक्विडिटी को एडजस्ट कोन करा लिक्विडिटी माने हला कि कहा पाखरे केते कैश अछि और से बडा लिक्विड फॉर्म जहा मनी अछि फॉर एग्जांपल कैश हे पारे गोल्ड हे पारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हे पारे ओके यार जो मूवमेंट इन द मार्केट ताको कंट्रोल करिया हला लिक्विडिटी को एडजस्ट करिया राइट स्पेसिफिकली इफ यू सी लिक्विडिटी रो गोटा स्केल भी अछि हमें से जो प्रीलिम्स से तमे पढिथियो व्हिच इज मोस्ट लिक्विड कैश इज मोस्ट लिक्विड से बडा गोल्ड इज वन ऑफ द माने एंती मिडिल वाला जिंस और भी लेस लिक्विड जिंस सब एसेट्स सब अछि so again we are not going into that thing but liquidity adjustment facility माने कोन specifically even within the liquid assets specifically cash रो movement को हमें कंट्रोल करिया कि हम पाखरे बैंक मान को पाखरे केते कैश अछि ताकू एंड से कैश रो माने कोन से कैश को तुम से माने क्रेडिट आकार रे देबे मींस लोन आकार रे देबे अन्य मानन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट माने बायर हे पारंती सॉरी इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर हे पारंती और इंडिविजुअल कंज्यूमर हे पारंती so ସେମାନେ जो रेट रे तांको पैसा मिलियो that will be controlled indirectly by the RBI by through this method that is known as repo and reverse repo and this helps the banks to meet their short term mismatches in liquidity short term mismatch माने माने अल्प टाइम पे हमरो लिक्विडिटी मिसमैच मींस डिमांड और सप्लाई भितरे जो मिसमैच होची ताको एडजस्ट करिया पई रेपो और रिवर्स रेपो मैकेनिज्म अछि ना यार माने कोन डिमांड और सप्लाई माने डिमांड और सप्लाई इन क्रेडिट ओके हियर क्रेडिट मींस लोन रो तो डिमांड फॉर फ्रॉम कस्टमर्स फॉर गेटिंग एनी काइंड ऑफ लोन ए कस्टमर इंडिविजुअल ही पारे इंस्टीट्यूशन ही पारे और डिमांड टू विथड्रॉ देयर ओन मनी माने यदि से डिपॉजिट करथे तांको विथड्रॉ करिया on the other hand there is also an ability of the bank to supply the credit so simply आमे कहू liquidity adjustment माने कोन माने होची किछि लोक जो माने डिपॉजिट करछन्ती ସେମାନେ ତାଙ୍କ डिपॉजिट विथड्रॉ କରିବାକୁ मागी पारंती और डिपॉजिट लोन बैंक रो नवाको मागी पारंती एंड ऑन द अदर हैंड केते एक्चुअली कैश अछि और लिक्विडिटी अछि बैंक रो किसे देई परियो सती जहा डिमांड तको मका अछि सो सपोज डिमांड अधिका अछि बैंक पाखरे लेस अछि सप्लाई अछि ताले कोन हो बैंक रो शॉर्टफॉल हे जो सो एटा स्पेसिफिकली एटा ही प्रॉब्लम है बैंक पाखरे तो शॉर्टफॉल हे बर्तमान भाव डिमांड कम अछि और सप्लाई अधिका अछि ताले बैंक पाखरे किछि प्रॉब्लम नहीं बैंक पाखरे एक्स्ट्रा मनी अछि बट प्रॉब्लम यूजुअली होय कि जतले डिमांड अधिका थाए बैंक पाखरे तबेले सती की सप्लाई न थाए तो से बेला केस रे हमें कोन करिया
और इवन थिंक कि जेतेबेले बैंक पाखे सरप्लस भी अछि, सपोज सरप्लस मनी भी अछि, से मनी को से ता पाखे रखी कोन करियो, रादर इट इज बेटर कि से आउ काहाକୁ लोन न दबो, इधर अन्य बैंक मानकु दबो, और इवन गवर्नमेंट को से पैसाटा एक्स्ट्रा सरप्लस मनीटा को दबो, गवर्नमेंट को भी डेवलपमेंटल काम पे पैसा दरकार, सो इट कैन आल्सो टेक लोन फ्रॉम द बैंक। सो डिपेंडिंग ऑन दिस डिमांड एंड सप्लाई रो माने एटा पूरा एंटायर एक्चुअली बैंकिंग जो ऑपरेशन दैट इज द गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ताको मैच करे। सो डिपेंडिंग ऑन दैट तारो लिक्विडिटी अप एंड डाउन होबो, and what the RBI will do is it will try to control it through two kinds of thing, one is repo, one is reverse repo. Okay. So please take 5 minutes break, we'll meet at 7:55.
Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, you can see my screen now. Screen share ହେଇଛି ତ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's come to this part ki how RBI is a controller of credit through this liquidity adjustment facility through repo and reverse repo. So repo माने कौन? देखो बहुत simply जहाँ जहाँ लिखा है most of you might have read this in your prelims any course or in your standard textbook देखी थी. So we'll try to, I'm not going to discuss in detail, but let us try to understand what this means. Repo and reverse repo are related to central bank, that is the RBI, and other commercial banks. Plus in between there is government. So ଯେତେବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହବ central bank କୁ ପଇସା ଦରକାର, central bank wants to borrow from the banks, so their central bank will borrow from the bank, and sometimes bank will need to borrow from the central bank or RBI, so they will also borrow. The point is कि ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ interest rate ରେ ତ borrow କରିବେ ନା each other ରୁ, ସେ interest rate ଟା କେତେ ହବ ସେଇଟା କଣ ସେଇଟା RBI itself will fix it, and from this you can understand कि ଯଦି RBI loan ଦଉଛି କାହାକୁ ସେଇ interest rate ଟା higher ହବ ସେ ଯେତିକି rate ରେ interest ନଉଛି, because it is the one who is fixing. ତ ସେଇ ଯୋଉ interest rate ରେ loan ଦଉଛି, loan provide କରୁଛି, ସେଇ interest rate କୁ କୁହନ୍ତି repo rate. ଯୋଉ rate ରେ ସେ borrow କରୁଛି bank ମାନଙ୍କଠୁ, that interest rate is known as reverse repo. The point is, why is it being called repo and reverse repo? The point is कि ये mechanism टा ऐसे simple ना. This mechanism is something known as repurchase option or obligation. ता माने होची कि से सीधा सीधा एमिति से माने पैसा निया दे हेबे नहीं. RBI कहयो ठीक अछि, I will give you loan, but in return you provide me some collateral. And इथरे collateral कौन? Here you have to provide government securities, G-Secs. Similarly, banks can also take loan. Sorry, banks can also provide loan to the RBI. Again, that will be based on the basis of or backing of G-Secs. G-Secs is government securities. Okay. तो एते सब यात्रा करियार पॉइंट कौन? ये सब यात्रा करियार पॉइंट एया होची कि RBI through repo will inject liquidity into the banking system, and through reverse repo it will absorb liquidity from the banking system. Okay. And why against G-Secs? Because G-Sec is a government security is a safe collateral, because government will never default, right? So government security is a safe collateral. Now how it injects and absorbs liquidity, try to understand. Suppose RBI रो objective होची कि market रे बहुत money बहुत अधिका ହେଇଛି, मतलब money बहुत अधिका ହେଇଛି but goods and services supply same ଅଛି, ताले कौन हबो inflation हबो. तो इन्फ्लेशन को आरबीआई केमती कंट्रोल करियो चाहिबो, चाहिबो कि मनी किछ मु मार्केट रो एब्जॉर्ब करने, मींस एक्स्ट्रा मनी किछ मु नै जीवनी जे. सो एब्जॉर्ब केमती करियो, से कहयो कि बैंक मान को कहयो कि तमे मोठो किछ देखो, आरबीआई जदी बैंक मान को मनी देला ताले मनी आरबीआई बैंक मान पाखरे मनी अधिका आइ, त माने कोन दे आर टेकिंग लोन फ्रॉम द आरबीआई. आरबीआई, इफ आरबीआई इज टेकिंग मनी फ्रॉम द बैंक, okay, loan of banks, RBI if it is taking money, then what is being happened, what is happening here, bank मान पाखर पैसा जाउची, so here it is absorb होउची पैसा. So money टा एबे यदि move कला from banks to RBI, and here then RBI will pledge what, government securities. On the other hand, if RBI is taking government security and providing money to the banks, that means what, money होची market रे अधिका money आसी जीवो, so it is injecting liquidity. एटा को केस रे हबो, जो केस रे सपोज हमको ग्रोथ दरकार थियो, इकोनॉमिक फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक स्लो डाउन ही is. So now what the RBI will do is कि RBI will provide money or provide a loan to the banks by taking G-Secs. Okay, I'll repeat again.
सपोज आरबीआई को मनी एब्जॉर्ब करियार अछि, देन व्हाट इट विल डू इज कि से मनी तापर लोन रे नहीं जीवो प्लस रिटर्न ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दो। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी संगे हमको कुछ लेना देना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पाई तो इन्फ्लेशन होनी ना। ऑन दी अदर हैंड जदि आरबीआई को इकोनॉमिक ग्रोथ को किक स्टार्ट करियार थिवो ताले से मनी मार्केट को दे दो थ्रू द बैंक्स, इन रिटर्न गवर्नमेंट सिक्योरिटी तांको नहीं जीवो। ओके, सो दिस ऑपरेशन इज नोन एज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो जो रेट रे से देबे माने आरबीआई जो रेट रे लोन दबो बैंक मान को, दैट रेट इज नोन एज रेपो रेट। जो रेट रे लोन से नबो बैंक मान को, दैट रेट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। So obviously they always, repo will always be more than reverse repo, right? So currently repo rate is 6.5%, reverse repo rate is 3.3%. That means RBI सबले अधिक इंटरेस्ट रेट पाइबो rather than केते दबो। एटा देखो, एटा सिंपलीफाई कर दिया अछि। देखो एटा कमर्शियल बैंक रे सरप्लस कैश अछि, तो आरबीआई कोन कोछि एटी एब्जॉर्ब करछि मनी, राइट, बदलले गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दोछि। सो एटा को केस रे होबो मतलब एक्स्ट्रा सरप्लस माने जतले इन्फ्लेशन अछि तमन इकोनॉमी रे। ऑन दी अदर हैंड जतले इकोनॉमिक ग्रोथ हमको दरकार, जब ग्रोथ डाउन ही अछि, ठीक अछि, सेतले हमें कोन करिया ताकू इंप्रूव करिया पे आरबीआई पैसा दबो। पैसा केमति दबो? गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं, राइट। So here RBI is lending at the repo rate, and here RBI is lending at the reverse repo rate, and always it will be that repo rate will be more than reverse repo. तो एमती लिखिए आरआर जना पड़ियो, repo is more than reverse repo. Okay. अच्छा, ये पार्ट हमने एक्सप्लेन करथिलु डिफरेंट parts or components of a bank's assets and liabilities. So we discussed that liabilities are its deposits, assets are the loans given, and if you take demand liabilities and time liabilities together, they are known as net demand and time liabilities. Why are we studying this? Because of later on what a concept as your CRR. So let us see what is the meaning of open market operations. Now, open market operation again is the buying and selling of G-Secs. तो बाय कले कौन हम, जदि आरबीआई बाय करुची तमाने इट इज एब्जॉर्बिंग लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। इफ इट इज सेलिंग मींस इट इज इंजेक्टिंग लिक्विडिटी इनटू द मार्केट, right? And it is being done by G-Secs, government securities. Why? Because government security is a safe security, right? Now the point is, usually you will see in all prelims standard textbook रे सब जिनस तुम देखियो, okay, these are the standard or these are the orthodox or conventional way of adjusting liquidity by the government. But there is also another unorthodox or unusual type of open market operation. This is known as quantitative easing. तो quantitative easing कौन? जेतल देखो गोटे सेंट्रल बैंक से तारो नॉर्मल सबू ट्रिक्स, तारो नॉर्मल ओपन मार्केट ऑपरेशन सबू जिनस फेल मारिगला टू एडजस्ट द लिक्विडिटी ऑफ ए सिस्टम, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग रिसेशन। तो से कौन करियो तापर सपोज रिसेशन माने कौन, इकोनॉमिक ग्रोथ पूरा डाउन ही छी, नेगेटिव रे ग्रोथ रेट नेगेटिव रही छी, so that means goods and services produce हो नहीं बेसी, so we want to create economic, more economic activity हमको create करियार अछि। more economic activity केमती create करिया, हमें inject करिया liquidity को inject करियार अछि market को। so somehow we have to provide money to the people। ଏବେ केमिति हमें money provide करिया market को? so here what the central bank will do कि it will start buying assets from commercial banks and other financial institutions by raising the prices of these financial assets and lowering their yield। तो माने कौन, सिंपली देखो यूजुअली कौन हुए, बॉन्ड यूजुअली कौन करियो, जो भी सेंट्रल बैंक थियो से मार्केट रो बॉन्ड किनिया स्टार्ट करियो। तो बॉन्ड किनिया में स्टार्ट करियो माने कौन, बॉन्ड किनिले ताको पैसा इन रिटर्न मनी देवा पड़ियो, तो या थ्रो रे मार्केट को मनी आसिला। सिमिलरली नॉट जस्ट बॉन्ड्स, इवन रियल एस्टेट रो, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स, ओके, डायरेक्टली सेंट्रल बैंक विल बाय द रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट किनिले कौन हो, लोकों पाखो मनी गला कि। तो these are unconventional ways in which you will not otherwise see कि central bank directly bond किनुछ market। you will not usually in usual scenario you will see कि central bank directly real estate किनुछ,
घर केबे गोटे आरबीआई घर किणुची हैव यू हर्ड घर माने तो गोटे सिंगल घर नो रियल एस्टेट टू सेल इट बैक अगेन एंड somehow create money inject money into the system so ये जो unusual monetary policy जो action को कहा जाए quantitative easing specifically global financial crisis 2008 रे US Federal Reserve had started this Ben Bernanke was the तांकर जे गवर्नर थिले US Federal Reserve it was very highly praised because it actually kick started US economy को kick start कला पर धीरे धीरे entire global economy slowly started recovering क्वांटिटेटिव इजिंग कि हमको को वे रे भी हमें मार्केट को मनी पठाया अच्छा इरे नॉट हेलिकॉप्टर मनी लिखिले कि हेलिकॉप्टर मनी भी था तो चलो एठी मु लिखिनी तो जस्ट एटा होमवर्क एटा देखि दियो एटा हेलिकॉप्टर मनी जस्ट सर्च एक्चुअली कोन कि जते बेले क्वांटिटेटिव इजिंग फेल मारे तले हेलिकॉप्टर मनी माने डायरेक्ट हेलिकॉप्टर थ्रू रे एमती लोकन को ऊपर पैसा पकाया करता तो डायरेक्टली कोन करियो सेई वाला सेंट्रल बैंक it will directly provide money to the people अच्छा एटा मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में अछि हेलीकॉप्टर मनी so now let us move to the next part cash reserve ratio देखो आज मु टिके सर रिलेटिवली फास्टर जाउछि yes सर ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन और क्वांटिटेटिव ईजिंग भीतर तो मते कुछ अधिक डिफरेंस जଣା पड़ला कैन एक्सप्लेन व्हाट्स क्वांटिटी ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन में कोन होछि G6 यूजुअली गवर्नमेंट सिक्योरिटी को यूज करा होछि एतरे गवर्नमेंट सिक्योरिटी किछि यूज करूनी ना एथे सेंट्रल बैंक डायरेक्टली किनुछि रियल एस्टेट डायरेक्टली किनुछि बॉन्ड डायरेक्टली किनुछि एनी अदर फाइनेंशियल इनफैक्ट any financial asset if the central bank directly buys then sells okay ये डायरेक्टली बाय कला कोन पैसा मार्केट को पैसा पठाइला ना so that will be known as quantitative easing तुम कहे एई छोटिया कथा को एते बड़ हाइप काई करा होछि पॉइंट होछि एटा छोटिया कथा नुह पॉइंट होछि सेंट्रल बैंक इज नॉट मेंट टू डायरेक्टली बाय और सेल एनीथिंग सेंट्रल बैंक इज अ रेगुलेटर का देखो बैंक माने बाय सेल सब कर पारे लोन दे पारे सब कर पारे सेंट्रल बैंक डायरेक्टली मार्केट रे इंटरवेन करियो मार्केट को से केवल रेगुलेट करियो बट हियर जतले ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की इकोनॉमिक रिसेशन हे गला then it will be forced to directly intervene without going through the route of government securities or any other intermediaries माने देखो यूजुअली से जहां भी काम करे ना सब बैंक मान को थ्रू रे काम करे तो सेटा ना मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में हम देखिया बैंक मान को थ्रू रे काम करे माने कोन जेंती लिक्विडिटी को रिजर्व करियो और इंजेक्ट करियो डायरेक्टली कोन आरबीआई इंजेक्ट करछि से कोन करियो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाई देबो और कमी देबो तो यार इंपैक्ट पड़ियो बैंक मान को ऊपर एबे बैंक माने अकॉर्डिंगली तांकर इंटरेस्ट रेट बढ़ेबे किबा कमेबे किंतु क्वांटिटेटिव इजिंग रे कोन से सब बैंक्स और इंटरमीडियरीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बाईपास करियो आरबीआई डायरेक्टली मार्केट रे इंटरवेन करूछ so this is the difference between normal open market operations and quantitative easing is a type of open market operation but here usual open market operation में हमें government security through रे करछु plus different intermediaries through रे जाउछ माने RBI who are the intermediaries usually banks and other financial institutions but in quantitative easing it is directly intervening even in the case of helicopter money we'll see later on in the case of helicopter money also directly the government is intervening in the market and एटा होची गोटा बहुत ही unusual जिंस जोटा कि which it is forced to do in the case of economic recession normal cases माने RBI will not or any central bank they will not intervene directly in the market रे ସେମାନେ निजे transaction करिवे नाही ओके सर सर एबे जो माने प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी एबे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रे डील करछन तो एबे सेटा एबे आरबीआई से ସେମାନେ डायरेक्टली ट्रांजैक्शन करि परछन तार हाँ हाँ G6 ସେମାନେ किनी पारे डायरेक्ट गोटे अकाउंट क्रिएट करिକି yes एटा लास्ट ईयर की तापूर्व वर्ष गोटे स्टार्ट हेतिला right but this will not qualify as quantitative easing quantitative easing हला कि financial assets directly किनियो लोक मान को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिक्री करले that will not count as quantitative easing ओके सर okay so let us see cash reserve ratio what is the meaning of cash reserve ratio ना cash reserve ratio होची सही amount suppose गोटे बैंक रो किछि some funds अछि तारो certain amount को cash form रे रखियो and केते percentage तारो रखियो that is being decided by the RBI now before we go into detail कि कौन रखियो
कहार परसेंटेज फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ए सब जिंस ए सब रेपो रिवर्स रेपो सीआरआर एसएलआर यार पॉइंट कौन these are the major interest rates okay and if you see even among this only the bank rate is the long term बाकी सब गुड़ा प्राय short term interest rates so ये जो interest rate गुड़ा अच्छी जदि आरबीआई ये इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दो ताले कौन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे आपनी so this will reduce the liquidity in the market जदि ये पॉलिसी रेट को डिक्रीज कर दो ताले इकोनॉमिक ग्रोथ हो व्हाई बिकॉज लिक्विडिटी विल इंक्रीज सो लिक्विडिटी डिक्रीज कराया दरकार हमको इन्फ्लेशन टाइम रे लिक्विडिटी इंक्रीज कराया दरकार हमको इकोनॉमिक ग्रोथ कराया पे ओके दिस इज द डिफरेंस नाउ ट्राई टू सी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अच्छा एटा काहे हम डिस्कस होलो बिकॉज हमें एते सारा जो डिस्कस होछु मेजर इंटरेस्ट रेट तारो पॉइंट कोन तारो पॉइंट होची कि टू इधर promote growth or to control inflation these two are the objectives na ता भितर भी even that relatively inflation targeting is the primary stance but economic growth is also the secondary objective of central bank right now to come back to this part crr माने कौन crr होची गोटे बैंक रो टोटल डिपॉजिट्स हम जो डिस्कस करथले नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज टोटल जति की भी तुमरो सेविंग्स अकाउंट करेंट अकाउंट प्लस फिक्स्ड डिपॉजिट्स अछि से सबुर केते परसेंटेज गोटे सर्टेन परसेंटेज को से बैंक माने आरबीआई पाखरे कैश फॉर्म रे रखी ओके एंड काहे की रखी बतन आरबीआई पाखरे कैश फॉर्म में काहे की रखी बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी व्हाट इज द सिक्योरिटी ये किछि लिक्विड फॉर्म में किछि कैश सब बळे थाउ से बैंक रो डिपॉजिट so that it should not face issue of bank run so if you remember what is the meaning of bank run can anyone explain एकता ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଏକା ଟାଇମରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ୱିଥଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେତେବେଳେ କିଛି very good ଆଇସିସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହେଇଥିଲା ମାନେ ତାକୁ ଆରବିଆଇ ସେଭ୍ କରିଦେଲା ରିସେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା yes correct so ଯେମିତି ଦେଖ ଆଉ ବି ଗୋଟେ if you have read this or not I think PMC और महाराष्ट्र कौन बैंक ଥିଲା ହେଟା PMC I think पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक और समथिंग ହେଇଥିଲା ନା ତାର ତ ବ୍ୟାଙ୍କ Yes, ରନ୍ sir. ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାର ସେମାନେ କଣ କଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଇ ପାରିଲେନି ଦେ ବ୍ଲକଡ accounts of the depositors ମାନେ ତମେ ତୁମ ନିଜ ପଇସା ହିଁ ବାହାର କରିପାରିବା so they were going to that extent so to prevent that kind of thing banks are required to keep certain amount of their own deposits with the RBI तो RBI कहले कि worst case scenario ये जो 4% हम पाखरे अछि will be able to return you this thing and you can manage your demand okay and obviously if এটা যদি ব্যাকअप अछि तो एथमै RBI ता ऊपर किछ इंटरेस्ट रेट दबो नाही so currently it is 4.5% earlier it used to be 4% ଏବେ ତାକୁ slightly hike कर दिया that means total ताकर demand and time liabilities रो 4.5% ସେମାନେ cash आकार रे रखिबे RBI पाखरे so what is the purpose main purpose is this bank run credit control for inflation targeting this is the secondary point and third point is to security कौन ना dissuades them from lending more बहुत अधिका माने किछि जिंस actually it is also blocking a certain portion of the bank's deposits जोटा कि बैंक माने अन्य मान को लोन आकार दे परिए ना बिकॉज़ जदी हमें एंटायर 100% अलाउ करदा तांको कि तुम जहां मन इच्छा करो ସେମାନେ ହେଇପାରେ କି 100% ତାଙ୍କର ଡିପୋଜିଟ ସବୁ ଦେଇଦେବେ ଲୋନ ଲୋନରେ କିଏ ଲୋଭରେ ଆସି ଦେଇ ପାରନ୍ତି ନା ବିକଜ ସେମାନେ ଭାବିକି ଆମେ ଟିକେ ରିସ୍କ ନେଇଯିବା ବଟ୍ ଆମକୁ ଇନ୍ ରିଟର୍ନ ଅଧିକା ପଇସା ମିଳିବ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପ୍ଲସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ ହେଇପାରେ କି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପଇସା ମିଳିବ ନାହିଁ ଏନପିଏ ହେଇଯିବ ଦେନ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଲୋନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ଦେ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ ରିଟର୍ନ ମନି ଟୁ ଦ ଅଦର ଡିପୋଜିଟର୍ସ ସୋ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ କରିକି ରଖିଦବା ଦି ଆରବିଆଇ ଦେନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିବ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ମେନ୍ purpose okay now statutory liquidity ratio SLR ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ CRR ଯେମିତି ଥିଲା କଣ କି କ୍ୟାଶ ଫର୍ମ ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ରଖିବ with whom with RBI SLR ହେଲା ସେଇ ଭଳିଆ କିଛି ନେଟ୍ ଟାଇମ ଏଣ୍ଡ ଡିମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଲାଇବିଲିଟି ମାନେ ତାଙ୍କ ଟୋଟାଲ ଡିପୋଜିଟ ର କିଛି ଆମାଉଣ୍ଟ କୁ ସେମାନେ ଲିକ୍विଡ ଫର୍ମ ରେ ରଖିବେ with themselves ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବେ ଏଇଟା RBI ରେ ରହିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଖରେ ଲିକ୍विଡ ଫର୍ମ ରେ ରଖିବେ ନା ୟା ମାନେ କଣ ଲିକ୍विଡ ଫର୍ମ ମାନେ କଣ ଆମେ ଲିକ୍विଡିଟି ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଛୁ ଲିକ୍विଡିଟି ମାନେ ହଉଛି गवर्नमेंट सिक्योरिटी ହେଇପାରେ cash ହେଇପାରେ gold ହେଇପାରେ but specifically for the purpose of SLR for the purpose of statutory liquidity ratio banks are encouraged to mostly keep it in the form of government securities କାହିଁକି ଏଟା କରନ୍ତି SLR ର ଏଣ୍ଟାयर ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ
एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएलआर इज कि एसएलआर अंडर रे हम कहूछु कि बैंक मानकु कि बाबू तुम तुमर टोटल जति डिपोजिट अछि तार किछि परसेंटेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी किनि पका गवर्नमेंट सिक्योरिटी से माने काहाटु किनुछन्ती सपोज गवर्नमेंट तो समान नेले पैसा गवर्नमेंट माने आरबीआई थ्रू रे बर्तमान गवर्नमेंट जो नेले से नहीं कि रखिले यार पर्पज या होची गवर्नमेंट को जी सेक केमती नेबे गवर्नमेंट को किछि मनी देके नेबे सो एमाने गवर्नमेंट को पैसा देले इन रिटर्न ताको गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिलला बैंक मान को ता माने कोन ता माने हेलानी कि से गवर्नमेंट को मनी देले आर यू एबल टू अंडरस्टैंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी से माने नेले रे माने कोन गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं कि ता बदले पैसा देले ना मनी देबे तो यार माने कि गवर्नमेंट इनडायरेक्टली ता माने या थ्रू रे बोरो करूची so the purpose of statutory liquidity ratio is to actually enable the government to borrow from banks against government securities तो याको गोटे आम नाम कर देइछु हम कहलु कि तुमको गोटे मिनिमम जो कोटा कर दिया गले तुमे गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखियो ता माने होची इनडायरेक्टली बैंक मानन को गला कि तुमे किछ गोटे मिनिमम परसेंटेज गवर्नमेंट को लोन दियो this is the point okay now yaar this is not the only reason there are other advantages of banks keeping government securities काहे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखे बिकॉज सपोज आमे किसी गोटे तांको डिमांड करना थांते कि आमे कहता कि तुम जहाँ डिपोजिट होची ना तो मन इच्छा जो जो फॉर्म में रख पारियो तुम इच्छा तो सामान्य दे विल यूजुअली प्रेफर टू कीप इट इन द फॉर्म ऑफ कैश बर्तन कैश रे रखले कोन हो हेई पारे किए गोटे नुआ मैनेजर आसला से अगेन दे विल प्रोवाइड माने एंटायर 100% मनी की इवन 96% भी चलो सीआरआर को छाड़ी की भी 96% से माने लोन वोन दे देले हेई पारे सेटा अगेन बैड लोन हे जिवो बट जी सेक जदि किनिकी रखिए ता भीतर किछि परसेंटेज दैट इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट व्हाई बिकॉज गवर्नमेंट विल नेवर डिफॉल्ट ऑन इट्स बोरोइंग्स सो आमे कोन करछु आमे फॉर एग्जांपल एसएलआर रे जो 18% अछि ता माने एटलीस्ट 18% ऑफ टोटल डिपॉजिट ता आमे बाध्य करछु बैंक मानकू गोटे सेफ फॉर्म रे डिपॉजिट करिया सेफ डिपॉजिट टाइप रो करिया सो दिस विल आल्सो एंश्योर गुड हेल्थ ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द बैंक and for this reason acha g6 is also known as gilt edge security gilt mane hoche gold edge security mane this is a very high value security because jette gote country ro kharap he hale bi government will not default on its loan government jodi loan nechi individuals or institutions may default but government will not default so to encourage them similarly if you are keeping government g6 banks can also borrow back from the government against g6 ताकि फॉर एग्जांपल हमर एसएलआर कोटा करिया पे से माने कहे कि हमको आउ दरकार होची गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड इन रिटर्न अगेन गवर्नमेंट विल गेट द मनी चलो एटा तो सेम पॉइंट रिपीट हिगला बट दिस इज द मेन पॉइंट so the second most important point that it is a safe investment and currently it is somewhere around 18% earlier in 2015 I remember it was 22 or 25 22% around very high एबे ताको टिके रिड्यूस कर दिया है now come to this part bank rate is actually a bit different from other kinds of rate because it is a long term interest rate means it is the interest rate charged on long period loans जो लोन गुडा को लॉन्ग पीरियड पे नहीं हम अन्य इंटरेस्ट रेट गुडा देखियो शॉर्ट टर्म माने कोन इवन 1 डे पे अछि ओपन मार्केट ऑपरेशन 7 डेज पे 14 डेज पे 21 डेज पे लॉन्ग टर्म माने 1 ईयर पे 2 ईयर पे ही सब वैल्यू पे सो एतिकी पे जो जो रेट रे लोन नेबे के बैंक माने जो लोन नेबे कहाटू आरबीआई टू एटा जो रेट रे चार्ज कराबो दैट इज नोन एज बैंक रेट so this is the long term interest rate charged by the central bank or RBI on the financial assistance to the banks that is the loans without any security this is most important again see why this is not classified under open market operation because एटा GSEC थ्रू रे हो नाही ओके किछे सिक्योरिटी से माने प्लेज करना डायरेक्टली से माने बस कहले कि मु आसी मो ना होची यस बैंक कि मु आसी मो ना होची एसबीआई मते एति टका दरकार so based on your reputation they will provide you so without any security or collateral किछि नै सेमते माने this is unsecured loan now this is now someone will say कि एटा safe नो बतन कथा होची विजय माल्या रो केस अलगा एसबीआई आईसीआईसीआई रो केस अलगा यूजुअली माने बैंक माने सेमते करिवे नाही बोले ट्रस्ट बेसिस रे दिया अगेन नॉट एंटायरली ट्रस्ट नो ताकर एक्चुअली बैलेंस शीट भी चेक हुए बैलेंस शीट चेक हेकी पैसा दिया एमते नै कि ओटा देबाळिया बैंक जाई कि बोटा उठे नहीं so currently the loan interest rate is 5.1%
But point is कि if you are taking bank rate loan माने it is an unsecured loan. Now come to this part, marginal standing facility. यार माने कौन marginal standing facility माने होची बेले बेले कौन हो usually आमी जो कथा हेतले temporary mismatch in liquidity. Temporary mismatch in liquidity माने demand और supply भितरे temporarily problem आसीगला. Suppose for example अधिका लोक आसी हमको demand कर देले पैसा बैंक पाखरे सेती पैसा नहीं तो बैंक फर्स्ट कौन ट्राई करियो बैंक ट्राई करियो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को एक्सचेंज करके आरबीआई ठो में भी लोन लोन नवा बेले बेले सपोज से थ्रो रे ओपन मार्केट ऑपरेशन थ्रो रे इट कैन नॉट बोरो मनी फॉर एग्जांपल सपोज गवर्नमेंट सिक्योरिटी सडनली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिप्लीट हे से आउ किनी पारला नहीं आरबीआई ठो गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिप्लीट हे गला बट स्टिल ताको मिसमैच हे होची ताको इमीडिएटली पैसा दरकार अछि तो बैंक कौन करियो देन बैंक विल टेक लोन अंडर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बैंक कहे आगे मो पाखरे गवर्नमेंट सिक्योरिटी फिक्योरिटी किसी ना बट मत ओवरनाइट रात राति मत एति ना दरकार इमिडिएटली एटा दरकार तो एटा यू कैन कॉल दिस ए सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी विंडो तो इमरजेंसी विंडो रे आरबीआई कोन कहयो आरबीआई कहयो ठीक अछि इमरजेंसी रे तुम मागु जो पैसा मु दे देबी बट जेहेतु तुम कोन तुमरो निजर इनकम्पिटेंस नाही और तुमरो मिसमैनेजमेंट पई एटा केतले ई कंडीशन आसी यूजुअली गोटे बैंक रो मैनेजमेंट भलो न हो सो मिसमैनेजमेंट पई जेतले हो जेहेतु होची सेतपई तुमको गोटे पिनालाइज कराबो पिनालाइज केमतिया कराबो इट विल बी गिवन एट ए पिनल रेट पिनल माने पनिशमेंट रु आछ तुम गोटे पनिशमेंट माने गोटे हायर रेट रे तुमको एटा दिया so this rate is usually equal to or even can even be higher than the bank rate and currently if you see it therefore 6.75% you see bank rate is somewhat 5.15% but msf रो rate interest rate होची 6.75% तमाने जो बैंक तार ठीक से मैनेजमेंट करि परियोनी राति अधिया फोन करी कहयो कि आगे मते सडनली कोटी टका दरकार आरबीआई कहयो ठीक अछि पैसा नियो बट तुमे हायर इंटरेस्ट रेट रे मते फेरेइबो एटा so these are usually overnight borrowings and second point is that एथरे भी मन इच्छा तुमे ह्यूज अमाउंट रो पैसा नहीं परियो नाही एमितिया नाही कि तुमे कहयो कि मु 100 कोटी टका राति राति तुमको दे दियो तुमको आरबीआई दबो ही नाही आरबीआई विल से कि you can take up to 0.5 to 1% maximum around 1% of the your total deposits एतिकी amount जते भी हबो तुमरो maximum तुमे सेतिकी नहीं परियो I'll repeat again आरबीआई कहयो कि ए जो पिनल रेट है दिस इज अ डिफरेंट थिंग एटा तो तुमे इंटरेस्ट केते चार्ज कराबो तुम ऊपर तुमे सेतिकी इंटरेस्ट रेट भी तुम कहयो कि आगे आपन पाखरे जते पैसा अछि हमन सब मते दे दियो नै सब दिया हबनी तुमरो टोटल डिपॉजिट रो गोटे सर्टेन परसेंटेज पर्यंत ही मैक्सिमम दिया जी पारियो एंड ऑन दैट यू हैव टू पे द 6.75% right so that level usually fluctuates 0.5 to 1% भितरे fluctuate करे एटा माने from time to time this regulation actually changes right now it might be 1% please just check this part I'm not going to teach in any exam it will usually not be asked because these are all completely useless methods किसी कामो दिए नहीं खाली नाम को गोटे रखा है for example moral suasion comes from the term moral persuasion कि आरबीआई कहयो बाबू रे धन रे तुम एमजा भलर काम कर एमजा लोकन को ठकाउनी ए सब जिंस थ्रो रे क्रेडिट कंट्रोल थ्रो ना हबो कि तुम मन इच्छा क्रेडिट दियो नहीं लोकन को तो ता थ्रो रे यूजुअली हुए नहीं सब बट कैटेगरी पई कर दिया है दुईटा कैटेगरी हो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कंट्रोल नोट रे अछि पढि दो टिल नाउ इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क marginal standing facility bank rate statutory liquidity ratio किसी डाउट अछि okay then let us move on to the next topic which is monetary policy transmission this is a very important topic it can individually be asked ki, what do you mean by monetary policy transmission or sometimes also called as monetary transmission okay and what actions can be taken to ensure monetary transmission or how does RBI ensure monetary transmission तो या माने कौन देखो तो आमे जो जति भी मेजर पॉलिसी रेट कथा डिसाइड कले डिस्कस कले फॉर मेजर इंटरेस्ट पॉलिसी रेट तो कहया पॉलिसी रेट तो दुई तीन टा ही पारे मैक्सिमम मेजर इंटरेस्ट रेट जहा
याकू कंट्रोल आरबीआई करे काहे आमे ई कथा भी कथा होतले कि ना कि यूजुअली आरबीआई डायरेक्टली मार्केट रे इंटरवीन करे नाही बिकॉज आरबीआई रे पॉइंट होची कि आमे यदि पॉलिसी रेट को और सॉरी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करिया कि डिक्रीज करिया देन तार इंपैक्ट बैंक मान को ऊपर पड़ियो अकॉर्डिंगली बैंक माने इंक्रीज करियो और डिक्रीज करियो कौन इंक्रीज करे डिक्रीज करे तांकर इंटरेस्ट रेट जोटा से चार्ज कर ऑन द लोन और क्रेडिट गिवन टू द कस्टमर्स हियर आर द कस्टमर्स फॉर एग्जांपल सपोज मार्केट रे इन्फ्लेशन बढ़ियाला तो आरबीआई कौन करियो आरबीआई विल इंक्रीज फॉर एग्जांपल रेपो रेट जो रेट रे लेंडिंग करूची बैंक मान को तार इंटरेस्ट रेट बढ़े दो तामाने कौन तामाने से क्रेडिट रो वैल्यू टा बढ़ियाला तामाने एबे से सेम जिंस न से सेम अमाउंट नवा पई बैंक मान को अधिका खर्च करियो पड़ियो सो बैंक माने अकॉर्डिंगली कौन करे तांको पैसा उठाया पई समाने भी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दे फॉर एग्जांपल आगरो सपोज हाउस लोन तुमको मिलुला 4% रे आई डोंट नो केते परसेंट मिले लेट अस से 4% रे नाउ जेतले रेपो रेट हाई की गला बैंक कहे कि एबे मु से पैसा रिकवर केमति करी एबे 4.5% कर दो और 5% कर दो सो नाउ योर कस्टमर माने बैंक लोन नवा को जिवे आगरो थिला 4% एबे ही गला 5% प्रॉब्लम एबे होची कि सी वी आर सपोज टू एट जिंसटा केमिति होवा कथा ए जिंसटा एमिति होवा कथा कि रेपो रेट जदी 1% इंक्रीज की डिक्रीज होची तो आमे एक्सपेक्ट करिया कि कस्टमर मान को पई भी सती 1% ही इंक्रीज और डिक्रीज हो इंटरेस्ट रेट because for example if RBI is cutting down specifically if RBI यदि reduce कर दोची interest rate तबने से growth को promote करिया पे दोची ओके जेतले इन्फ्लेशन नहीं हमर ऑब्जेक्टिव होची ग्रोथ को केमति हम बढ़ाया सो सपोज रेपो रेट 1% ड्रॉप हेल तो आमे एक्सपेक्ट करिया कि मार्केट रे भी कस्टमर मान को 1% लेस रे लोन मिलु बट एक्चुअली देखियो यदि 0.2% और 0.3% डिक्रीज हितियो जमा माने आगरो जदि 4% रे तुमको लोन मिलुतला एबे हार्डली 3.8% हबो तो आरबीआई भी कहे मु तो 1% डिक्रीज कली बैंक मान पचारे तुम माने कहीं से डिक्रीज कर सो ए जो इश्यूटा हुए दिस इश्यू इज द बैरियर टू मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन होची जहां मॉनेटरी एक्शन ऊपर निया हबो सेटा लोकन पर्यंत पहुंचियार अछि ट्रांसमिशन हबो ओके जहां ऊपर डिसीजन निया होची सेटा एमति तळ पर्यंत ट्रांसमिशन हबो बट प्रॉब्लम हुए कि इधर ट्रांसमिशन हुए नहीं और सेतिकी लेवल हुए नहीं जतिकी हमें एक्सपेक्ट करू so what is MPT now when actions of the monetary policy especially the raising or lowering of major interest rates like repo crr bank rate this percolates down to the consumers through the banks and other financial institutions now problem setale हुए कि setale bank और financial institutions माने often do not pass on the benefits of the rate cuts by RBI rate cuts by RBI माने RBI एतले interest rate देखो RBI एतले interest rate बढ़े दो setale bank माने बढ़े दे किंतु आरबीआई एतले इंटरेस्ट कमेइबो बैंक माने कमेइबे यार रीजन गोटे बहुत सिंपल कथार तुम यू कैन कोरिलेट देखो एतले पेट्रोल दाम डीजल दाम बढ़ी जिवो बैंक सॉरी बस माने रात राती हम भड़ा बढ़े दे करेक्ट किंतु जेबे जो दिन देखबे पेट्रोल रेट डीजल रेट कमिबो से माने केबे कमेइबे और जदी भी कमे सेतिकी लेवल कमेइबेनी जेतिकी लेवल दाम कमिथियो माने पेट्रोल डीजल रेट जदी 10 टका बढ़ी गला पर लिटर भड़ा तांकर 20 टका बढ़ी जिवो किंतु 10 टका जदी कमी जो इंटरेस्ट रेट इधर टोटाली कमिबो नहीं और 10 टका जगह हार्डली 3 टका कि 4 टका कमिबो एटा होचे एक्जेक्टली सेम जिंस बढ़ी गला बेले इंटरेस्ट रेट बैंक मैंने खुशी बढ़ी दियंती बिकॉज तांको कोन फरक पड़े तांको तो सेम अमाउंट रो पैसा बाहर करियार अछि किंतु एतले कमी दिया हुए से माने से बेनिफिट टा पास ऑन करंती नहीं ओके सो दीज आर द दिस इज नोन एज बैरियर्स टू मॉनेटरी ट्रांसमिशन सेतले हमें कहया कि मॉनेटरी ट्रांसमिशन हो ना तो हियर आई हैव गिवन एन एग्जांपल कि जेतले आरबीआई रिड्यूस करे रेपो रेट बाय 100 बेसिस पॉइंट माने 100 बेसिस पॉइंट माने 1% तो सर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माने मे बी 50 बेसिस पॉइंट रिड्यूस करिए ताले कोन ओनली 0.5% ही रिड्यूस हबो टोटल हमर लोन रेट ता बर्तन याकू काउंटर कामे केमतिया करे सो आरबीआई बहुत भाबियो कि सेंट्रल बैंक माने भाबी कि हमें कोन कले हमें ए जिंसटा प्रिवेंट कर परिया कि हमें जदि रेट कट करूचे माने यदि हमें किछि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करछे ताले कस्टमर्स मानकू से सुविधाटा पहुंचो तो सेतल प्रथम से कोन करे तले कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी फेल मारी होची सेतल से क्वांटिटेटिव इजिंग से माने ट्राई करी तो क्वांटिटेटिव इजिंग रे नाउ यू लास्ट की क्वांटिटेटिव इजिंग रे लाभ कोन तो से माने क्वांटिटेटिव इजिंग रो पॉइंट ही हला या कि ऊपर जेतले सेंट्रल बैंक रहउची मझरे अदर बैंक्स माने रहउचंती तापरे डायरेक्टली कस्टमर्स माने रहउचन और कंज्यूमर्स माने रहउचन
ଏବେ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन बाधा किए दूची ए माने दोचे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस माने जदि सेंट्रल बैंक एमान बाईपास करके डायरेक्टली कंज्यूमर पाखु पहुंचबो ताले डायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन हो सो एटा पहुंचवार गोटा तरीका होची क्वांटिटेटिव ईजिंग so we had discussed quantitative easing कि directly financial assets मानक किना हबो financial assets are specifically bonds okay? even real estate को भी ସେମାନେ କିଣିଦେବେ तो ଯେତେବେଳେ real estate କିଣିବେ directly ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଆସିବ so the benefit will get directly transmitted to the people now here it is okay highly helicopter money ଟା ଏଠି ଅଛି but ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ even quantitative easing ବି fail ମାରିବ to revive what to revive economic growth ଏସବୁ ଜିନିଷ ଫାଇନାଲି ଆମେ ରେଟ୍ କଟ୍ ବାଇ ଦ ୱେ କାହିଁ କରୁଛେ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ କାହିଁ କରୁଛେ ରେଟ୍ ହାଇକ୍ କରିବାର ମାନେ ହଉଛି ଇନଫ୍ଲେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ରେଟ୍ କଟ୍ और रेट को रिड्यूस କରିବାର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଗ୍ରୋଥ କୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ତ ଯଦି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଇଜିଂ ବି ଫେଲ ମାରିଗଲା ମାନେ କନଭେନସନାଲ ମେଥଡ ବି ଫେଲ ମାରିଲା ଅନକନଭେନସନାଲ ଅଣ୍ଡରରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଇଜିଂ ବି ଫେଲ ମାରିଲା ତାହେଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଷ୍ଟ ରିସୋର୍ଟ ହଉଛି ହେଲିକପ୍ଟର ମନି ମାନେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଇସା ବର୍ଷା କରିବା ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଇସା ବର୍ଷା କରିବାର ମାନେ କଣ to give money directly to the consumers okay now how it will give directly to the consumers this is your homework try to find out the helicopter money ro mechanism कौन what are the different mechanisms of people getting directly money from the central bank ro people man को directly केमती जाए okay? and you read the example of Argentina also now the point of this drawback of both quantitative easing and helicopter money obviously is inflation डायरेक्टली यदि बहुत अधिका पैसा आम लोक देदेबा इश्यू कौन हम ना डायरेक्टली लोक पाखे अधिका पैसा हो गले इनफ्लेशन बढ़ी आम यहाँ भी एमती इन जनरल भी तो आम जाने ग्रोथ आउ इनफ्लेशन दे यूजुअली मूव इन द सिंबल यूज करिया कथा ना माने बोथ यूज इन मूव इन द सिमिलर डायरेक्शन ग्रोथ बढ़िले इनफ्लेशन बढ़ियो ग्रोथ कमले इनफ्लेशन कम राइट I'll give you some homeworks today because the chapter टा माने huge chapter so it's not possible to 100% सारी possible no 90% around will finish 10% will be I'll give you as homework ସାର୍ yes ସାର୍ ଆପଣ କହିଥିଲେ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଯୋଉ ଏଜିଂ ହେବ ସେଇଟା ବହୁତ ରଷ୍ଟ ସିଚୁଏସନ ରେ ହେଲେ କରାହବ ବହୁତ हाँ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ ରେ ସେଠି ତ ନର୍ମାଲ ସିଚୁଏସନ ରେ ବି କରାହଉଛି ନା ଯଦି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରାଇସ୍ କଥା ଯେମିତି ହେବ ସେଇଟା ସାର୍ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେମିତି ना ना पेट्रोल प्राइस टा सेटा ना दैट इज ए पैरेलल देली माने सेटा नॉर्मल केस रे सेटा माने दैट इज नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल केस ନା जो ସାର୍ पेट्रोल ବ୍ୟାଙ୍କ प्राइस କେସରେ ବି ତ ସେମିତି ସାର୍ ନର୍ମାଲ ହଉଛି ନା ସେ ना ପାରାଲାଲ ना ଏକ୍ସାମ୍ପଲ बैंक ଦେବେ बैंक रे जे जहां भी इशू होची फॉर एग्जांपल सपोज हमरो रेट कट से माने पास ऑन करू ना तो फिर भी किछि परसेंटेज तो एक्चुअली पास ऑन करछन ना तो तांको कोन तांको टिके थ्रेटनिंग रेटिंग देकी तांको इंसेंटिव्स देकी आरबीआई फाइनली पास ऑन करोची टू ए ग्रेट एक्सटेंट तापर भी फेलियर हेले दिस इज फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो एपर्यंत हमको सेम क्वांटिटेटिव इजिंग रो आवश्यकता पड़ी नहीं होची मना करनी सपोज 1% आरबीआई कट करूची बैंक माने मे बी मैक्सिमम 0.5% करिया बट स्टिल लाभ पास ऑन होची क्वांटिटेटिव इजिंग हमें को कंट्री इमीडिएटली करिया को चाहिबो नाही तार रीजन होची जेतेबेले गोटे सेंट्रल बैंक गोटे डायरेक्टली इकोनॉमी रे माने इंटरवीन करियो तार बहुत खराब इंपैक्ट भी पड़ियो खराब इंपैक्ट माने कोन सपोज एटा भाबी के देखो प्रैक्टिकली कोन इशू हो एबे हम कहूचे फाइनेंशियल एसेट किनियो से सपोज से फाइनेंशियल एसेट किनिवारे जतले इट इज सपोज टू बी ओनली ए रेगुलेटर जतले डायरेक्टली किना बिका करियो नाउ देयर विल आल्सो बी एलिगेशंस ऑफ करप्शन आल्सो सेकंड कथा हला ये एक्यूरेटली एसेस भी कर परियो नहीं व्हाई बिकॉज़ इट इज नॉट द एक्सपर्टीज ऑफ सेंट्रल बैंक रो इकोनॉमिक रेगुलेशन होची एक्सपर्टीज बैंक मानकर एक्सपर्टीज होची ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ ଆସେଟ को केतिकी वैल्यू रे किनिबा बैंक माने जानछन्ती कि बॉन्ड रो रेट केते और बॉन्ड गोटे सर्टेन बॉन्ड whether it will move up or down ए सब जिंस तांकर एक्सपर्टीज अछि सेंट्रल बैंक जदि ए सब जिंस रे इंटरफेयर करे हे पर सेंट्रल बैंक इटसेल्फ लॉस पड़ी पारे जति वैल्यू रे से माने एसेस करते ता ठरो लेस वैल्यू एक्चुअली हेतु तो यार बहुत सारा नेगेटिव इंपैक्ट भी अछि ता भीतर मु डिटेल गले नहीं बिकॉज़ ए सब जिंस पचरा हबन कि यू राइट इन डिटेल व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग बट पॉइंट इज इट इज नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड जति तुम भाबुछ कि जदि एटा ही सॉल्यूशन ताले सेटा ही काहे करा जाउ नहीं so that is done in the worst case scenario specifically जतले इकोनॉमिक रिसेशन गोटे आसी जो इवन देखो इवन एबे रिसेंटली हेइतिला कोविड पई भी रिसेशन हेइतिला तथापि आरबीआई कला नहीं काम तो जदि कला नहीं तार विषय भलो रीजन थिबो ना
क्वांटिटेटिव इजिंग को एक्चुअली ताको मैनेज कराटा बहुत डिफिकल्ट. बेन बर्नांक इफ यू सी ही वाज ए लेजेंडरी पर्सन. एक्चुअली गोटे मूवी अछि इफ यू हैव सीन सोशल नेटवर्क जो फेसबुक ऊपर है ना सेतरे बेन बर्नांक रो गोटे माने बेन बर्नांक कैरेक्टर इटसेल्फ इज देयर सो दैट इज प्लेड बाय वन वेरी आल्सो वेरी गुड एक्टर. तो एक्चुअली व्हेन ही वाज आल्सो अर्लियर इन हार्वर्ड रो से प्रथम प्रेसिडेंट थे सेही टाइम रे माने जाय कि जो फेसबुक करते मार्क जकरबर्ग से विंकलवॉस ब्रदर्स से माने जायथिले बेन बर्नांक पाखु बेन बर्नांक को गाली देके बाहर करते इज लेजेंडरी पर्सन. ही वाज द पर्सन एक्चुअली हु इम्प्लीमेंटेड क्वांटि sorry QE successfully and that led to revival of US economy. बट कथा होची कि डू वी हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज हमरो सेमति हमें भी नहीं हमर सेति कॉन्फिडेंस भी नहीं कि हमें हेती करी हेटा सक्सेसफुल करी पारे एटा बहुत ही फाइन ट्यूनिंग रिक्वायर करे बहुत फाइन ट्यूनिंग सेति पे वी डोंट यूजुअली प्रेफर. ओके ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. एबे सब किछि ना छोटो स्मॉल टॉपिक्स केवल अछि अल्प दिटा किने सॉरी जिवा जे हम क्लास रे चैप्टर सॉरी ओवरऑल 80% around is over less is there. ଏବେ ଦେଖ NBFC itself will be asked in one 10 marker ରେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି directly कि what are NBFCs and how they are regulated usually ଏଇଭଳିଆ question କିଛି ଆସେ okay. or how it is different from other banks. So let us try to understand कि NBFC माने कौन. If you see in this figure NBFC is a sort of overlap between a company and a bank. Okay. It is neither fully a company nor fully a bank. So गोटे एमती मिडिल ग्राउंड रे अछि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. ओके सो देखो नाम रे बैंकिंग भी अछि फाइनेंशियल कंपनी भी अछि. नॉन बैंकिंग एथके अछि कि नॉन बैंकिंग माने भाबे नॉन बैंकिंग लेखा अछि तो ताले बैंकिंग एक्चुअली इट इज बैंक बैंक और फाइनेंशियल कंपनी मजा मजा इट इज a hybrid. So yeah, why do we call it NBFC? Because it provides some banking services. Here the keyword is some, but in a way which is different from banks. So in a way different from banks माने कौन ना बैंक माने जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती दैट इज फॉर एग्जांपल इट इज बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रिंसिपल कैन यू टेल मी. डिपॉजिट एंड लोन्स सिंपल एसेट्स एंड लायबिलिटीज माने होची किछि लोक हेतरे जे बैंक रे डिपॉजिट करिवे से पैसा को आ किछि लोक लोन ने दो. बट एनबीएफसी रो काम कोन कि ए दुइटा जे एक जिंस एका संगे न थाए स्पेसिफिकली यूजुअली डिपॉजिट टा यूजुअली न थाए ऑल्दो आमे परे भी देखिया किछि एनबीएफसी रे यू कैन डिपॉजिट. सो जेमती डिपॉजिट फॉर एग्जांपल लोक माने किछि भी जाई कि किछि भी अमाउंट रो जाई कि जमा कर परिवे एंड केही किछि भी लोन नहीं परिवे सो दैट इज ए प्रॉपर बैंक. बट एनबीएफसी कोन कहयो ठीक अछि either it is not allowing deposit at all or if it is allowing in certain forms. For example जो लोन गोल्ड लोन कंपनीज तो ସେମାନେ कोन ସେମାନେ कैश नो ना ସେମାନେ कहउछन तुम डिपॉजिट करियो गोल्ड दियो ता बदल में लोन नियो राइट. So either they will not take deposit or it will take in a very peculiar form. And secondly, either they will not give any loan or even if they are giving loan that is in a typical form. So एटा यार माने बुझ पालो कि some banking services but in a way different from banks. Okay. So now when I give you examples then you will be able to understand कि या माने कौन. For example, these are companies which are engaged in leasing business, hire and purchase business, housing finance business, gold loan business, different insurance product एमाने बिक्री करछन, venture capital एमाने दउछन. venture capital माने कोन जोटा स्टार्टअप को फंड करिया को दिया जाय किछि लोक गले कहि हमें स्टार्टअप बात कर हो ठीक है स्टार्टअप माने सेमाने डिपॉजिट करना मनी बट दे आर बीइंग गिवन मनी ऑन द होप कि सेमाने सक्सेसफुल है कि से मनी टा को रिटर्न करिए. ओके so because of these it is called as NBFCs. What is the meaning of NBFCs therefore? NBFC is something which is hang on a sec, which is a which is an overlapping between a company and a bank. So it is neither purely bank nor purely a company, right? So these are if you see merchant banking. What is merchant banking? Merchant banking is a bank which helps in commercial loan and investment जोटा अन्य बैंक मानकु और अन्य client मानकु help करे to get to raise loan to get deposits in all of these things. Directly ये banking करे नहीं merchant banking. For example, if you even as a company if you want to मान तुम्हें share market रे invest करिया को चाहूँ
Okay, so you will go to a merchant banker. Merchant banker will help you. It will give you consultancy ki how you are supposed to invest or how you are supposed to raise money from the market. Okay. Similarly, chit funds. Chit fund माने कौन? बहुत small amount रो deposit हमें बहुत सारे लोगों को नहीं की इसे गोटे specific sector रे हमें ताको invest करिया. Okay. And then you will return it back to them. Right. So all of these companies are not exactly banks, but they are a mix of banks and companies. Now, if you see that there is a difference between chit funds and there is a difference between the rest of this. All of the rest are registered under this Companies Act 1956. Okay. By the way, don't think you Companies Act 2013 ଆସିଗଲା ବୋଲି. Originally, this was the original act under which registration was required. Okay, it's under same act. But chit funds are registered under Chit Fund Act 1982. The reason is that या पर भी हमें चिट फंड को हायर बेसिस रे माने हायर डिग्री रे ताको कंट्रोल करियो ट्राई करछि तो चिट फंड रे बहुत सारा इशू अछि चिट फंड रे कोन कि बहुत सारा स्मॉल सेविंग्स जो लोगन थाए तो ताको मैनेज करियाटा इंपोर्टेंट बिकॉज तांकर यदि लॉस हे गला बहुत सारा लाइवलीहुड लॉस हे जो सेटा ग्रेटर रेगुलेशन करिया को गवर्नमेंट माने ट्राई करंती. If you try to understand which are the categories of NBFC, NBFC टा दुटा broad category दुटा अछि गोटा होछि non deposit taking NBFC, one is deposit taking NBFC, also known as residuary NBFCs. यार मानने हला या कि देखो non deposit taking and deposit taking माने कोन माने किछि NBFC अछंती जो माने deposit लोकन को ठरो deposit नौ छंती, although again in not the same way as other banks. So in a different way they are taking deposits. For example, gold loan जो माने, so they are taking deposits. But the problem is most of the NBFC if you see they are non deposit taking. माने ସେମାନେ डिपॉजिट ही नहीं होती नहीं ସେମାନେ directly they do other kind of economic activity जा थ्रू ସେମାନେ पैसा उठाते. So if you see most of the NBFCs are actually non deposit taking. Only a few are allowed by the RBI to be deposit taking. So जेहेतु एमानको नंबर लेस अछि एमानको सेतमै रेसिडुआरी भी कहते रेसिडुआरी NBFCs. So there are the less number of NBFCs who accept public deposits. Now this is the most important part. They will ask you from if the question is asked, this will be asked. प्रथमे तो तुम्हें explain करियो कि NBFC माने कौन. If you want, you can draw this diagram. Then they will ask you how are they regulated. The problem is कि different NBFCs are actually covered by different regulator. Different regulator माने कौन माने किछि NBFC को RBI regulate करछि, but there are many other NBFCs which are being regulated by other specific sector specific regulators. What does this mean? Sector specific regulators. This mean कि for example housing finance companies. This is एटा होछि गोटे NHB होछि sector specific regulator. जेते भी हाउसिंग फाइनेंस और हाउसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज अछि कंपनीज अछि ताको रेगुलेट करछि नेशनल हाउसिंग बैंक. इफ यू सी इन GS2 पेपर हमर गोटे यूपीएससी रे गोटे लाइन रे लिखा अछि कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेगुलेटर्स. सो ए सब गोटा रेगुलेटर अंडर आसे. सेबी इज ए रेगुलेटर, आरबीआई इज ए रेगुलेटर, ओके, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, IRDAI, these are all regulators. इंश्योरेंस कंपनी इज बीइंग रेगुलेटेड बाय सब इंश्योरेंस कंपनी को के रेगुलेट करे इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI. सेमती वेंचर एंड मार्केट बैंकिंग कंपनी सॉरी मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज को के रेगुलेट करे सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया. So different banks, sorry, different types of NBFCs are regulated by different regulators. Now can you tell me which type of NBFCs do you expect to be regulated by RBI? From this can you guess? एगुड़ा तो सेक्टर स्पेसिफिक अछि. कोनटा तुमको लागै छै ओटा RBI डायरेक्टली रेगुलेट करतो? Sir, those which deal with money. Very good. Those who directly are taking money from the public, that is deposit taking or residuary NBFC को directly RBI will monitor because एठी लोकंकर directly लोकंकर पैसा इन्वॉल्व अछि. तो काली तुम यदि देखो NBFC और बैंक मान भीतर बाय द वे एटा गोटे लेवल रो भी डिफरेंस अछि कि नै. बैंक टा होछि बिगर जिंस, NBFC टा स्मॉलर जिंस. तो बैंकिंग रेगुलेशन ऊपर बहुत सारा कटकणा अछि. काली तुम यदि गोटे NBFC स्टार्ट कर दे कि तुम लोकन को डिपॉजिट नै गायब हे जिवो, बहुत लोकन को पैसा बुडी जिवो.
So RBI has now what it has done ki, in fact most of the regulations if you see of deposit taking or residuary NBFCs we are talking about, most of the regulations on them are almost equivalent to the regulations imposed on commercial banks, normal banks, right? So deposit taking NBFCs are directly regulated by RBI, which has imposed regulations at par commercial banks. For example, these deposit taking NBFCs are required to maintain CRR, SLR at par the commercial banks, right? तो ସେମାନେ भी कैश रिजर्व रेशियो रखिए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रखिए, न रखिकी ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କଠୁ directly deposit ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ. So what is the purpose of this regulation and what is the purpose of this NBFC? The main purpose is financial inclusion. कि समस्त एमती फॉर्मल चैनल्स ऑफ इकोनॉमी के आसी समस्त एमती बैंकिंग सर्विसेज पाइबे. बैंकिंग एटा हमें कथा हेतुला फाइनेंशियल इंक्लूजन माने कोन? बैंकिंग सर्विसेज, मिनिमम बैंकिंग सर्विसेज किछ मिलियो. NBFC is होची which provides some banking services even though at a different way than banks. So financial inclusion habo, mobilization of household savings habo, and mobilization of household saving hele credit creation in the economy करे दो RBI. Plus it will directly help in the growth of infrastructure projects. काहींकी because if you understand NBFC माने suppose जहाँ भी लोगों को to directly or indirectly यदि money नेले, or even if they are not residuary entities, if they are getting any other kind of resources, for example ସେମାନେ market to capital market to ଯଦି ଉଠୁଛନ୍ତି पैसा, what they will do ki then they will invest it in certain infrastructure project which will give them higher rates of return. ताको higher interest rate रे ताको पैसा मिलियो, then they will return it back to the people or they will माने have the profit. So directly infrastructure को हमको funding मिलियो. Infrastructure sector of India, remember, it is hungry for investment. हमको infrastructure ପାଇଁ पैसा मिलियो ही नहीं. तो हम sector पूरा माने it needs money. So जो एरिया थ्रू रहले तक money दरकार. Specifically NBFC is a major contributor of infra projects. And this is another homework for you. Just read about this Ireland FS crisis. ଏବେ ଆଉ ଏଇ crisis ଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଉଛି NBFC related crisis ଗୋଟେ. Roll over risk ଏଇ ଜିନିଷ term ଟା ବି ଆସିବ ସେଥିରେ. Possibly try to find out ୟାର ମାନେ କଣ ଥିଲା. This will not be asked in your exam. This is for extra information. So this is related to infrastructure. NBFC ମାନେ କଣ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି infrastructure project ରେ invest କରି ଦେଇଥିଲେ. Right? So the growth of infrastructure project will happen. Deepening of India's bond market and share market. बॉन्ड मार्केट और शेयर मार्केट डिपेंड हो इन द सेंस डिपेंडिंग माने कोन की ये मार्केट गुडा डेवलप हो. एटा यूजुअल कहा कि इंडिया रो बॉन्ड मार्केट और शेयर मार्केट हो बहुत शालो इन द सेंस कि हमरो एते वाइड यूजर बेस नाही. ओके, एंड सेकेंडली even the people who are investing, that is limited to a narrow section. And specifically for infrastructure projects or long gestation period projects माने जो प्रोजेक्ट गुडा को लंबा टाइम दरकार फुलफिल होवा पे ସେମାନେ यूजुअली पैसा पाती नहीं. So NBFC डेवलप हेले कोन हो इंडिया रो बॉन्ड मार्केट और शेयर मार्केट डेवलप हो इन द सेंस कि NBFC माने इन्वेस्ट करे बॉन्ड मार्केट और शेयर मार्केट रे एंड सेथिरो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाला कंपनी माने पैसा लोन मिलियो तांको तांकर काम करिया पाई. ओके, that is the point. This is the last topic for the day, non performing assets. After that we will wind up. So let us see what is the meaning of non performing assets, also sometimes known as bad loans. एटा हमें कथा हेतलु कि जदि नो डिले प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रे ताले दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड एसेट. 0 to 30 हेले SMA 0, 31 to 60 हेले SMA 1, 61 to 90 हेले SMA 2, above 90 days हेले सेटा नॉन परफॉर्मिंग एसेट हिजो. माने से एसेट रो माने तुम से लोन बैंक जो लोन देथियो ताकू फेरी पाइबाटा डिफिकल्ट. Now what is the point that might be asked in your exam? Exam रे एसो जिंसो यूजुअली आसीबो नाही कि लेख किसी भी जिंसो ऊपर स्पेसिफिकली लिखियो नाही. Still I will give you an assignment to write about specifically these things. DRT, this is important. Surface Act ठीक है important. Asset reconstruction company is important. Okay, then एसो जिंसो किछि भी गुडा किछि भी चालू नाही, एटा भी चालू नाही. Insolvency and bankruptcy code is important. Recapitalization is not required. Project सशक्त and bad bank. तो what I will do कि 1 2 3 4 5 पांचटा टॉपिक ऊपर शॉर्ट नोट्स आई विल आस्क यू टू राइट. जस्ट रीड एंड टेल मी. माने इंस्टेड ऑफ राइटिंग आंसर फॉर टुडेस असाइनमेंट जस्ट राइट शॉर्ट नोट्स.
ମୁଁ ବହୁତ ସର୍ଟ ରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଏସବୁ ଜିନିଷର ମାନେ କଣ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ कंपनी माने कौन होला किसी डिफॉल्ट करिगले सेतेବେଳେ बैंक मानकर एनपीए सब बढ़िगला। ये प्रॉब्लम टा लास्ट 4-5 वर्ष इवन इवन लॉन्गर देन दैट बार बार तुम न्यूज रे पढ़थो कि बैंक मानकर एनपीएस बहुत बढ़ी बढ़ी जाउछि बैड लोन्स। एबे तो चलो से खराब लेवल ला नहीं जति भी 3-4 वर्ष तळे थिला एबे टू ग्रेट एक्सटेंट इट इज फाइन। बट जेतेବେଳେ बढ़ी बढ़ी चलला सेतेବେଳେ इवन फ्रॉम 1947 itself माने when we started ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆରବିଆଇ ତ ଏମିତି ବି 1935 ଗଲାଣି 49 आई थिंक इट वाज बैंक रेगुलेशन एक्ट आसला। बट एनीवे बैंक मानकर अक्रॉस बोर्ड बैंक मानकर एनपीएस थ्रू द इयर्स इंडिया रे बढ़ी बढ़ी चलता एनपीएस। सो इन 1993 फॉर द फर्स्ट टाइम आगु प्रॉब्लम कोन होतला आगु सब जिंस होतला कोर्ट को डायरेक्टली माने नॉर्मल जुडिशियरी को जाउतला केस। सपोज तुम लोन नहीं गलो पैसा फेरेलनी तुम अगेंस्ट बैंक गोटे केस फाइल करियो तो से कोर्ट रे जाई पड़ियो। कोर्ट केते वर्ष टाइम नो 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष तापर भी हे पारे इफ यू आर अ बैंकर यू विल नॉट गेट बैक योर मनी। फाइनली कोर्ट कौन करियो देखियो से जो गरीब टाइप है से माने आसीबे बहुत दुखरे करे एंड इट वाज आल्सो देयर नेसेसिटी आल्सो दे कुड नॉट पे बैक एंड यूजुअली कोर्ट यूज्ड टू टेक कंज्यूमर फ्रेंडली एटीट्यूड कि चलो ये गरीब लोक अछन देई परना तो से माने फाइनली कौन करे केस डिसमिस कर दे। तो यार लास्ट माने इंपैक्ट कौन पड़ला बैंक मानकर ही एनपीए ह्यूज बढ़ी बढ़ी चलला। एबे लॉन्ग टर्म इंपैक्ट कौन बैंक ह्यूज एनपीए हेले से फाइनली जो माने डिजर्विंग लोक तांको भी से देई परियोने लोन तो आम तुम आम भाया लोक माने भी लोन पाई परियन। सो फाइनली गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू एस्टैब्लिश अ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल व्हिच इज अ सॉर्ट ऑफ ए सिविल कोर्ट। तो एथिरे कोन कराला ए एक्ट गोटे आसला एथिरे कहला कि एबे नॉर्मल कोर्ट को जुडिशियरी को न जाई कि डायरेक्टली सिविल कोर्ट को जीवो व्हिच इज डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो सेथिरे त हमें कोर्ट एक्सपेडाइट कर देबा ए टाइप रो केस। बट अगेन एटा भी एते सक्सेसफुल हला नाही यार भी बहुत सारा लेवल थिला डीआरटी न ही पारले तुम ता ऊपर डीआर80 थिला डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने तुम तापर अपील करियो तो सी भी अगेन नॉर्मल कोर्ट भले ही माने गोटे ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस हे गला अगेन सेथिरे रिकवरी जल्दी ही पारला नाही बैंक माने जहां लोन देते। तापर गोटे एक्ट आसला सरफेसी एक्ट गोटे बहुत लंबा चौड़ा नाम अछि सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन फॉर समथिंग समथिंग ओके डोंट नीड टू रिमेंबर द पॉइंट इज सरफेसी एक्ट रे फर्स्ट टाइम पे कोन होला दिस वाज एटा गोटे भलो इनिशिएटिव थिला। ए एक्ट कौन कला एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोली गोटे मेकानिज्म क्रिएट कला। ये कहला कि यदि बैंक माने बहुत सारा ताकर एनपीए हे बैंक मानकर मेन काम होची बैंकिंग सर्विसेज दवा राइट सेथिरे से माने होची एक्सपर्ट्स एनपीए बैड लोन रिकवर करिया काम रे से माने एक्सपर्ट नहंती। एबे गोटे बैंक मैनेजर थोड़ी ना गाँ गाँ बोली कि कहयो कि अरे बाबू तुम पैसा कहीं देनु मते पैसा फेरा कर परिए। सो व्हाट बैंक विल डू कि हमें तांक पई किछि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी माने किछि गोटे सर्टेन टाइप रो कंपनी हमें तयारी करिया जे कि बैंक रो गोटे डिस्काउंट रेट रे लोन नी डिस्काउंट रेट रे लोन माने कोन सपोज बैंक लाख टका 1 लाख रुपीस लोन देइतला ताको से पैसा किछि फेई पाउन तो से कौन कहो कि तुम्हें 50,000 रे तू माने मते एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कहो मते 50,000 दे दे तो मु कौन करी बाकी मु जो मोर खाता रो से जिंस रे डिलीट कर दी कि चलो मोर 50,000 लॉस हे गेला लॉस लिखि कि सेटा को अकाउंट क्लोज कर दी। बर्तमान एआरसी कौन करियो 50,000 दे की बर्तमान ये बोलियो गाँ गाँ रे कि बाबू काई पैसा देनो तुमर जहाँ कोलेटरल थिला सिक्योरिटी जहाँ रखिथिलो प्लेज करथिलो कोलेटरल सेटा मते दियो ताकू से माने बिक्री करी जहाँ करी हेतु पैसा उठाई मे बी 70,000 80,000 पैसा उठाई बिकॉज पॉइंट इज कि एथिरे ताकर एक्सपर्टीज अछि ए सब काम करिया रे। सो बैंक को खुशी हे गला बैंक को चलो किछि मिल नथला एटलीस्ट 50,000 मिलला एआरसी भी खुशी कि ताकू भी हमती किछि मिल नथला ताकू 20,000 प्रॉफिट मिलला। सो दिस इज द मेकानिज्म दे क्रिएटेड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तापरे ए सब किछि किछि जिंस सब आसला दीज आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड नाउ बिकॉज ए सब जिंस एबे किछि चालू नाही। इंद्रधनुष स्ट्रेटजी देखियो एबीसीडी ईएफजीएच एमतिया करिक से माने पांचटा सॉरी सातटा से माने रिकमेंडेशन देइथिले एस फॉर ए स्कीम बंद हे गला बैंक बोर्ड्स ब्यूरो एबे नहीं एबे एसएफआईबी बोली कहि कि अछि नॉट रिक्वायर्ड। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ओपे गोटे नुआ आसला 2016 ने दे सेड कि जेतले गोटे कंपनी गोटे देबालिया हो जाउतो बैंक्रप्ट हो जाउतो इट कैन स्टार्ट अ प्रोसीडिंग फॉर बैंक्रप्सी एंड से प्रोसीडिंग को डिफरेंट वे रे हाउ दे विल मैनेज इट केमती इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट करा हबो। सो दिस इज योर टास्क फॉर टुडे just try to write 3 to 4 lines max on each of these topics IBC गोटे सरफेसी एक्ट एंड ARC गोटे
डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल गोटे आ फाइनली प्रोजेक्ट सशक्त गोटे सुनील मेहता कमिटी और बैड बैंक प्रोजेक्ट सशक्त रे से गोटे फ्रेमवर्क बाहर कले कि केमिति आमे धीरे धीरे we will consolidate our bad loan situation can consolidate करिया केमिति बैंक माने डिफरेंट स्टेप ने सो दैट डिफरेंट लोन को डिफरेंट वे रे क्लासिफाई करिए ता ऊपर स्टेप नेबे कि ताको रिकवर करिया पे बैड बैंक फाइनली दिस इज सिमिलर समथिंग सिमिलर टू ARC's एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ये कोन एटा गोटे सुपर बैंक जोटा कि सबु बैड लोन गोटे बैंक रो और मेजर बैंक मानकर बैड लोन गोटा एका संगे नै कि it will do the similar work as ARC and it will have other extraordinary powers which were earlier not given to any asset reconstruction companies. And तार ना एबे दिया है I think 2 वर्ष तलर यूनियन बजेट रे आस्तिला ए प्रोविजन टा NARCL दिया है okay so this is your homework. I will for the sake of your explaining you I will post it. बाकी बैंकिंग रिफॉर्म्स अल्प किछि अछि ठीक अछि दुईटा जिनस नरसिम्हन कमिटी रो दुईटा रिफॉर्म्स खाली 2 पेज रो अछि जस्ट गो थ्रू इट very simple things how they try to how Narasimhan committee try to reform Indian banking sector. Do you have patience or I have patience? If you want I can explain this, so just let me know whether you want to continue or not or not. Note देकी छाड़ दे यदि अल्प किछि पिलाई पाए still I will continue. Should we continue or should we Yes, sir. stop? Briefly explain. Yes, sir. Okay, ठीक अछि. So let us see कि banking reforms कौन. So this is the last topic for the day and banking reforms को directly भी समाने पचार देवे कि नरसिम्हन I think one question was asked कि नरसिम्हन committee recommendations कौन थिला. So दुईटा major reforms हेतिला 1990s रे. Both of them were Narasimhan committee under it. Okay, so don't get confused, one was 1991, one was 1998. So try to understand ये कौन हेतिला. First of all, if you see overall ଆମର banking culture India ର बहुत ही खराब थिला. Right, गोटे जोक कहा जाए कि किसी लोक कौन है SBI को समाने SBI रु चोरी करिया गले डकैती बट से डकैती कर पारलेनी बिकॉज से लंच टाइम रे जाइथिले. द पॉइंट इज इफ यू गो टू SBI इन लंच टाइम से कहे कि बाबू लंच टाइम अछि सब ब्रेक रे अछंती ब्रेक परे आस. द पॉइंट इज व्हाई वाज दिस कल्चर सो बैड. इफ यू सी बैंक्स लाइक SBI बिकॉज दे वर पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो तांकर एम्प्लॉइज मानकर जॉब सिक्योरिटी थिला से परफॉर्म करंतु न करंतु किसी फरक पड़ेनी. बहुत ही खराब वर्क कल्चर थिला. नाउ से पॉलिटिसाइजेशन बहुत ह्यूज थिला इन द सेंस कि बैंक एम्प्लॉय माने ह्यूज नंबर हेतले जोतरे डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट टाइप रो भी हेतला विदाउट एनी रिक्वायरमेंट देयर आर मेनी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. ओके, जने स्टाम्प बाडया पई अछि जने स्टिकर लगाया को अछि डिस्गाइज मेनी डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट तांको भितरे ट्रेड यूनियन टाइप रो गोटे यूनियनिज्म भी बढ़ी गला. एबे एमाने गोटे वोट बैंक हे गले तो तांको सैटिस्फाई करिया पई पॉलिटिकल मास्टर्स माने पॉलिटिशियन माने तांको सपोर्ट नवा को तांको भी बाहर करिया को देले. तो ये जो गोटे टॉक्सिक कल्चर जो क्रिएट है या द्वारा बैंकिंग सर्विसेज वाज वेरी मच अफेक्टेड. सिमिलरली अदर प्रॉब्लम वर कि फॉर एग्जांपल बैंक लाइसेंस दबा को कुआ होतला माने RBI कोन करियो बैंक लाइसेंस तो दे दो ओपन अप करिया किंतु बैंक माने क्लोज करिया को दबा नहीं. माने सपोज यू आर अ बैंक SBI बैंक तुम चाहो कि रूरल एरिया रे तुम गोटे एस्टाब्लिश कर दो गोटे ब्रांच खुशी कि चल हम रूरल एरिया रे लोकन को बैंक सर्विस दवा बट सपोज सेटा प्रॉफिटेबल हलानी तो तुम जीव RBI को कहयो कि आगे हम बंद करिया चाहू. RBI कहयो हम पर इंडिया रे तुम अछो इंडिया रे पर हमरो डेवलपमेंट पई दरकार रूरल एरिया रे क्रेडिट पहुंचा दरकार तुम केमती बंद कर दो ही नथले बंद करिया. so that means inefficient operation होतला. सिमिलरली बैंक नंबर ही एते कम थिला कि SBI रे जो मोनोपोली थिला ता द्वारा एमाने बहुत ही इनएफिशिएंट थिले इनकम्पिटेंट थिले. तो ए सब प्रॉब्लम पई कोन हला देयर केम अ टाइम इन 1991 when I think around 14 out of 20 banks they were on the verge of collapse. So yes, 14 out of 21 private banks were on the brink of collapse. So 1969. So 1969 they were also nationalized. Bank nationalization hitla if you remember Indira Gandhi time रे. तो again ता द्वारा problem कौन हला जेतले nationalization हला ता माने कोन माने एबे माने प्राइवेट बैंक माने पुनी पब्लिक सेक्टर बैंक हे गले again ए problem सब आसला ट्रेड यूनियनिज्म disguised unemployment because job security आसियाला. Similarly, say same culture, ago culture that continued and that even became worse.
तो याकू नजर रखी 1991 रे ये जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स बसला नरसिम्हन कमिटी इट गेव सम रिकमेंडेशंस। फर्स्ट से कहले कि आउ फर्दर नेशनलाइजेशन करो नाही मींस प्राइवेट सेक्टर बैंक जो माने रहिले सेमान विल लेट देम बी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ओके वी विल इंक्रीज देयर एफिशिएंसी इन अदर वेज बट सेमान को प्राइवेट सेक्टर बैंक कर देले सेना आउरी खराब हिची। सिमिलरली आरबीआई को कहा गला कि बैंक ब्रांच लाइसेंसिंग को एबोलिश करो नाही सॉरी माने ब्रांच लाइसेंसिंग रेजिम को एबोलिश कर दियो सो दैट बैंक को तुम शुड बी फ्री टू डिसाइड कि से ब्रांच क्लोज करिए और ओपन करिए कोठी। सेमिति पब्लिक सेक्टर बैंक को कहा गला कि तुम्हें कैपिटल मार्केट रु पैसा उठाओ फॉर एग्जांपल बाय इशुइंग शेयर्स माने पब्लिक सेक्टर बैंक वाज आल्सो एनकरेज कि तुम्हें कंपनी मानक भलिया निजर किछि शेयर मार्केट रे तुम्हें इशू करो फॉर एग्जांपल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ करके सेतरु मनी उठाओ शेयर मार्केट रु मनी उठाओ व्हाई बिकॉज़ इफ यू नीड फंड्स डोंट गो टू द गवर्नमेंट एमाने कोन करथे जेते या पैसा दरकार थिले सब गवर्नमेंट को जाई पैसा मांगी तो नरसिम्हन कहले तुम्हें मार्केट रु पैसा उठाओ ना अब जो मन तुम पैसा दोछन ताको रिटर्न करियो। Similarly, it asks recommended to set up more banks for competition and efficiency. से कहला कि आरबीआई को कहले तुम गोटे लिबरल पॉलिसी फॉलो करो बहुत सारा बैंक को डेवलप होगा दियो इंडिया रे सेटअप करिया को दियो सो दैट देयर विल बी कंपटीशन। रिमेंबर नंबर ऑफ बैंक्स को बढ़ाओ किंतु बैंक ब्रांचेस वेदर से माने ओपन करियो और न करियो सेटा दैट शुड बी लेफ्ट टू द बैंक इटसेल्फ बैंक रो मैनेजमेंट। सेमति जान कहले कंप्यूटराइज कर दियो एंटायर इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री को कंप्यूटराइज कर देले कोन होबो डिजिटलाइज हे गले से माने दे विल बी एफिशिएंसी तांकर बढ़ियो अगेन सब जिन आगर मानुआली होता गोटे जगह एबे भी बहुत जगह एसबीआई अच्छे ना जड़े प्रथम तुमको कह ये स्लीप रे साइन करो तापर काउंटर नंबर 5 को जाओ सेठू जड़े स्टाम्प बाड़े काउंटर 7 ने एटा को एथिरे जण को सिग्नेचर आनो तो कंप्यूटराइज हेले कोन रैपिडली जिनसटा हे पारि। सिमिलरली इफ यू सी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो दिस टुगेदर अकाउंटेड फॉर मोर देन 50% इन 1991 माने ए दीटा को वैल्यू बहुत हाई रखा हितला अधिका कष्ट से कि आरबीआई एते हाई कर देइतला कि समाने तमाने जदि 50% रु अधिका यदि गोटे ब्लॉक हेकि रहला गोटे बैंक रो फंड्स तमाने कोन से आउ लेंडिंग करि परिबनी तार एक्चुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी ही बहुत कमी जो सो एथमे माने बैंक माने पूरा चोक टाइप रो हे जेतले सो नरसिम्हन कमिटी रेकमेंडेड कि ताको रिड्यूस करो फेजेस से okay it asks them to reduce it in phases and now if you see it 18% संगरे like the 4.5% or something okay? So 22-23% टोटल ही अच्छी एसएलआर सीआरआर मिसिक ऑफ टोटल नेट टाइम एंड डिपॉजिट सॉरी टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज त माने एबे बैंक मान पाखरे 75 ऊपर को अराउंड परसेंटेज रो फंड अवेलेबल अछि व्हिच दे कैन यूज इन अदर थिंग्स। सिमिलरली प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को केते रिड्यूस करे को सतल 40% एबे भी ऑलमोस्ट 40% अछि इन सतल दे रिकमेंडेड टू रिड्यूस 10% because of this choking choke जो हेइतला तांकर फ्री कैपिटल तांक पाखरे अवेलेबल नथला टू इन्वेस्ट इट इन एनीवेयर so they said ki reduce the priority sector lending. Similarly हेतले they asked to set up DRTs in fact या पर ही debt recovery tribunals को establish हला to recover bad loans this stands for debt recovery tribunal. बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन ऑफ पीएसपीज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को एस्टाब्लिश करे कुहागला जोटा कि पर सरफेस एक्ट अंडर आसला बहुत वर्ष पर सेबे इमीडिएटली ही नथला सेबे से माने एटा को इंप्लीमेंट करल था डीआरटीज एंड सतले ऑलरेडी बेसल नॉर्म्स 3 नथला आई थिंक 1 और 2 सतला आसला तो से सतल से प्रोविजनिंग नॉर्म्स ना 1993 रे आई थिंक बेसल नॉर्म्स 3 डा एनी द ईयर इज नॉट इंपोर्टेंट पॉइंट इज बेसल नॉर्म्स रो प्रोविजनिंग नॉर्म्स को इंप्लीमेंट करिया को कहाला इंक्लूडिंग कैमल्स जो पांचटा प्रिंसिपल हमें लिखिथिलु okay. These were the major recommendations in 1991. Then in 1998 on banking sector reforms author again same Narasimhan he came and he gave after 7 years some other important recommendations and it kahi ke hela if you try to understand the 1991 ने तले से recommendation देथिले एलपीजी रो impact already was not being felt immediately टिके टाइम लागला एलपीजी impact feel करिया को कोन impact हला जतले ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी इंडिया रे गला किछि फॉरेन बैंक्स आसी कि इंडिया रे ताको ब्रांच स्टार्ट करिया को कहले कि हमें इंडिया रे सेटअप करियो सपोज बार्कलेस से आसी कहि कि इंडिया रे सेटअप करियो सो गोटा रोड रे बार्कलेस अछि एसबीआई अछि बार्कलेस बैंक को गले तुमर काम धड़ा धड़ ही होछि एसबीआई रे गले कहउचंती लंच करे आसो व्हिच वन विल यू प्रेफर
So even before the foreign banks came to India, now RBI was worried कि एबे एमाने आसिले हमर इंडियन बैंक माने तांका संगे compete करि परिबे नाही. So to make Indian banking sector more competitive at par them, as well as to keep up with the demand of the opening up of economy. यार आउट रीजन भी है कि ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी हेगला, इकोनॉमिक ग्रोथ भी है कंट्री. ग्रोथ हेले कोन पिला लोकन पाखरे बेसी पैसा आसीबो, बेसी पैसा हेले से माने बेसी बैंकिंग सर्विसेज खोजिबे, त माने बैंक ऊपर प्रेशर भी बढ़ी जिवो. तो ए सब जिंस पई गोटे आउटे सेकंड फेज रो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म बहुत ही नेसेसरी थिला, राइट. So because of these reasons, Narasimhan Committee in 1998 रे gave further recommendations. First he said कि strong Indian bank को other strong Indian bank से merge कर दियो. यार पॉइंट कौन थिला से कहले देखो फॉरेन बैंक माने बे आसी सन बहुत ही पावरफुल अछंती. इंडियन बैंक में जो छोटे छोटे बैंक माने अछंती ना, एंड छोटे भी नो माने सपोज से माने आइसोलेटेड ही के अछंती, individually they will not be able to compete with large foreign banks. So we have to merge them together. सेमती तीन चारटा की दी तीन टा को मिसे की जदि हम गोटे एंटिटी बैंक कर परिया, now they will be able to compete with the foreign banks. बर्तन क्वेश्चन उठला कि आमी जो दुई तीन टा मर्ज करिया इंडियन बैंक को एंड ताको मर्ज करी गोटे सिंगल बैंक करिया सपोज एई वाला दुई तीन टा टोटल माने भाबो नौटा बैंक को हम मिसे की तीनटा बैंक करिया. तो को टाइप रो बैंक को टाइप रो बैंक रे मिसा हो. तो इनिशियली किछ लोग कहले कि आमे कोन करिया स्ट्रांग बैंक को वीक बैंक संगे मिसेदा, हेले वीक बैंक रो डेफिशिएंसी फिल अप हो जिवो. बट नरसिम्हन कहले कि बाबू तुम यदि स्ट्रांग बैंक को वीक बैंक संगे मिसेबो, भाबनी कि से रिजल्टिंग बैंक टा स्ट्रांग होबो, से रिजल्टिंग बैंक टा एक्चुअली वीक हो. So he suggested कि rather you merge strong bank with strong bank and outcome गोटे जो strong Indian bank होबो, now that will be able to compete with the foreign banks. Okay. Similarly, he said कि speedy computerization of Indian bank करो, जोटा कि earlier तांका recommendation थिला, it was not implemented. He said कि depoliticize PSB boards, public sector bank मान करो board माने which were managing the banks, they were being micromanaged by the government of India. माने गवर्नमेंट तांकर सब डिसीजन ने कि माने बैंक मैनेजर मानू काम करिया को दिया होनथला कि बोर्ड मेंबर मानू काम करिया को दिया होनथला. डायरेक्ट गवर्नमेंट रो सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर फोन करी कहले कि आने तुम इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ कि कमाओ. तो ए बिकॉज ऑफ दिस माइक्रो मैनेजमेंट तांकर एफिशिएंसी कम ना, बिकॉज जो लोकर जो थरे एक्सपर्टीज तांको से थरे फुल फ्रीडम दिया जो काम करिया. तो ई सेड कि डीपोलिटिसाइज, राइट, नॉट जस्ट आईएएस ऑफिसर्स, स्पेशली मोर पॉलिटिशियंस. फॉर एग्जांपल कोन होतला आ गोटे शॉर्ट एग्जांपल कहूची. आगुरु सेमानकर गोटे जो जेमती प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग थिला जहाँ टार्गेट दिया होतला, सेमाने कोन करिवे ना लास्ट बेलको सेमाने सब टार्गेट मीट करिया को लोन मेला कर दे. तो लोन मेला रे कोन हो लोक माने जो माने नो भी नथे ना जबरदस्ती कहे नहीं तो लोन निया, बिकॉज़ हमको फाइनली ईयर एंड शो करिया अछि कि हमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट अचीव कर दीछु. पॉलिटिशियन माने यार फायदा नै, सेमाने कोन करिवे तांकर करप्शन मनी को इतरे मनी लॉन्ड्रिंग करे देबे. ओके. सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस एंड हाँ पॉलिटिशियन मैंने पुणी कौन करे लोन वेवर भी कर दे अजथारे. इलेक्शन आसुची किसी लोग फार्मर्स आसी पहुंचे आज्ञा आम एत लोन नहीं आमको लोन छाड़ कर दिए. से कौन भोट बैंक पॉलिटिक्स दरकार, से फोन करके मैनेजर को कहले कि लोन वेवर घोषणा कर. तो मैनेजमेंट किसी कहीपर देन गवर्नमेंट विल डिक्लेयर कि से जहाँ लोन देते दवा दरकार नहीं. तो ये क्षति कार हम प्रथम तो इमिडिएटली बैंकिंग सेक्टर हो, बट इन द लॉन्ग टर्म हमर ही क्षति हो, नॉर्मल कंज्यूमर्स मानकर ही क्षति हो. बिकॉज देन बैंक विल नॉट गिव लोन टू एनी पीपल और द अमाउंट ऑफ लोन विल ग्रेजुअली रिड्यूस, तार इंटरेस्ट रेट भी से बढ़े देवे, तो फाइनली पैसा रिटर्न पाइबार अच्छे ना. सिमिलरली सो दे ही सेड कि डीपोलिटिसाइज कर दियो. बैंकिंग प्रैक्टिसेस से एफिशिएंसी आने को कहली. ट्रेनिंग ऑफ बैंक एम्प्लॉइज. ओके, आम एसबीआई एम्प्लॉय कथा कहूलु, लंच ब्रेक टाकू 2 घंटा नियो नहीं, घंटाटे पळे आस घर. दिस काइंड ऑफ स्टफ. ओके. सिमिलरली देयर वाज ए क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो. एटा हम जो कथा होतल ना कि को मेकानिज्म अछि मोर सेटा मने पड़नी, समथिंग CRIDL और L एमते किछोटा अछि. आई जस्ट चेक इट क्लास पर मु तुम चेक करी कहई. जणे एमते क्वेश्चन पचाले सर बैंक माने काहे कि तांका कथा होना, बिकॉज़ आगुर से डेटाबेस ता नथिला. 1998 रू से मन रिकमेंडेशन नरसिम्हन कमिटी रिकमेंडेशन देथिला कि ओटा क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो बाहर कर, जोटा कि बैड लोन और डिफॉल्टर मान को ऊपर इंफॉर्मेशन रही. सो एटा तापर भी एटा इंप्लीमेंट हला नाही बोली सब विजय माल्या केस रा. जदि हम पाखरे गोटे डेटाबेस थांता ताले बैंक मान को भितर कम्युनिकेशन ही था. एंड फाइनली आरबीआई शुड नॉट हैव शेयर्स इन पीएसबीज. आगु कोन होतला
आरबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक मानकर भी इन्वेस्ट करथुल तार शेयर किनिकी सो शेयर किनिया माने कोन यू आर ए पार्ट ओनर शेयर किनिया माने यू हैव पार्टली ओन्ड द कंपनी सो जदि गोटे आरबीआई जदि गोटे सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक रो गोटे ओनर पार्ट ओनर भी केमति हबो इट इज सपोज टू बी ओनली ए रेगुलेटर जदि एटे ओनर होची जदि शेयर किनुची ताले एटा बायस हे पारे से पब्लिक सेक्टर बैंक प्रति तो हेतिबे नरसिम्हन कहले कि you should not do that you allow them to RBI should not be buying shares in the market so these two are the major reforms apart from these following reforms with जोटा important reforms for example ये जो IBC जोटा है ना I'll give you as assignment just research करो 3-4 लाइन लिखी show me okay it's not an माने आज हेटा माने question नुह कि which you will write answer to just write 3-4 parts okay ठीक है so that's all for today if you have any doubts please ask any doubts no anyway I think today we are having had a very long class so thank you for your patience we'll meet again अच्छा by the way our next economics class 2 January around habo ठीक है then we will take up the topic of budget okay so next economics class will be 2nd January tomorrow you have ethics class ठीक है thank you guys